Hello, 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 hello. Yeah, hi, welcome to live stream.
Hi Karthik, welcome to live stream. Hi Karthik, welcome to live stream. Hello, hello, hello. Yeah, good.
Wait. Hello, 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 hello. Yeah, good. So hi Charles, welcome to live stream. Hi Charles, welcome to live stream. Welcome to live stream. Hey, hi Charan, welcome to live stream. Welcome to live stream. So we have one question, one query from Charles. Like, are you data analyst? Yes, Charles, I am data analyst, and if you ask me regarding my work ex, I am having 5 year and 5 months of work ex in corporate sector as a data analyst, and also I am a freelance gig who work for the freelance client, and in total I have worked for total 8 freelance client. The eight client means the eighth number client I am working on right now. So that's all about myself. Charan Gaming, hello bro. Yeah, hi Charan, how are you? So yes. Charan gaming. Bro, on average, how much income you will get per each client? Depend on the payout, bro. Like this client, I would say they are giving us a payout of $7 to $14 per hour. Per hour in the sense depend on the requirement and depend on the work. It changes as changes per on a per day basis. So depends on that. So on average, we will discuss it later because right now the thing is I'm working with the client on the way right now, and that's kind of, I would say, like, let me tell you one thing. Once I complete working with this client, means when once I am done with this client, give him all the insights and hand over him the project, then we can discuss about it. Okay, Charles, bro, I was learning front-end Python but left it past 2 years. Now confused between whether I should do UI, UX or go on in programming field. Bro Charles, let me tell you one thing. Whatever interests you, go with it. Let me tell you that. Uh, See, if you are much more interested and inclined into UI, UX, then you can go on that and relate. UI, UX means designing field. What I am uh, like aware about it, and programming field. See, anything whatever you are interested in it, go to that field. Let me tell you, okay? Because at the end of the road, you have to only study, you have to only practice, and you have to only make some use out of that thing. So it is fully depend on you, Charles. If you want whatever, let me tell you one thing, whatever thing, like either it's UI, UX, means designing kind of thing, either it's programming language, learning a programming language, whatever makes you curious to learn something new, or whatever creates insight, create interest inside you, go for that thing. Because let me tell you, at the end you have to take care of that thing. You have to study, you have to solve problem, or you have to work for some companies, then you are the only one who have to work out on that thing, okay? So it is fully depend on you. Whatever interest you, go with it. Don't see, like, in today's scenario, what is
being kind of highly required, or what is, or I mean whatever programming language is highly used, don't go with that thing. Each and every time, as per the requirement, the programming language changes and the requirement also changes. So stick with one thing or one programming language or anything, whatever creates interest in you, then go with it. Okay. We have one more question from Charles. Bro, I am overwhelmed. How many years in communication we have to do in UI UX, whereas I found learning programming difficult but enjoy building things, but due to reason of competition, no entry jobs. See, let me tell you one thing. If you are going for the UI UX in today's generation, in today's field, in near future, what will happen, see, each and every programming language or each and everything in this world have a saturation point. Okay? So don't think about it like competition is there, or let me tell you one thing, uh, demand is not there. Simple, let me tell you one word or a one liner thing. Don't see about what is happening today or what is going to happen tomorrow. Anything you learn today or anything you learn tomorrow, like each and everything have their own saturation point. ठीक है ना? During 2017, when I was working as a data analyst, that time data and like very less people know about this field. Data analyst means those who are working in corporate sector, they only know, most of them don't even have idea, like they might have idea but they don't have that much idea related to SQL or related to Python for data analytics. But in today's scenario, they know everything. They want to study, they want to learn, they want to grow. And let me tell you one thing, in near future, this field, data analytics field, will get saturated, and then 2 3 years down the line, after the saturation, it will grow. It is just like a roller coaster ride. ठीक है? Don't think that ki competition is high, job is not there. Let me tell you one thing, whatever interests you, go with it. Okay, we have one more query. I just want to become specialist in one field like programming and do my job without much communication like in UI UX. See, like you have the answer with you. If you want, like you only told you want to be expert, or you would say you want to have a good grip on one field in any of the programming language, either it's C, Java, Python, XYZ, anything. So go with it. Go with it, because you have only told from your inner heart that you have that much interest. Okay? So go with it. That's it. Go with it and enjoy it. Like the things what you enjoy to do, it will create a good impression in your mind, good logic and concept building for you and for your mind. Okay? So whatever things interest you, go with it. Okay, we have one more query. Like, is high maths enough for MLDA, etc.? Okay, let me tell you one thing. For data analytics, it is not, like maths is not much required. No, basics to basics is required. But let me tell you one thing, for data scientist, yes, AI, like, let me go to the base part and then comes, let me tell you something about maths. In data science, you know what? See, there are four pillars in data science. First, SQL. Second, Python. Third, maths. Mathematics means statistics, probability, linear algebra. Fourth is AI ML. So if you don't have a good grip on this four pillars for data science, ठीक है, it is very tough to excel, or I would say grow in this field. But let me tell you one thing, for data analyst, for data engineer, we don't need that much maths. Only basic to basic maths is enough to go with it. Okay? And yes, I have one answer for you. No, enough maths is not required for data analyst. But yes, if you are going into data scientist field, let me tell you one thing, good amount of maths and good grip in maths is much more required in data science part. So please take care of that. Okay? Charles, what do you think about Rust? Rust, let me tell you one thing. I came to know about Rust from YouTube. How I came to know?
Like in my YouTube recommendation, I got one reel where it was showing the highest, I mean to say the today's top programming language in recent 2025 generation. So Rust came into picture. Means from there I came to know that Rust is the language which is used very widely in 2025. So from there I came to know about Rust, and let me be very frank with you, I don't have any idea about Rust because that's purely into programming field and I am purely into data analyst field. So in my part, what I have seen in near future, data engineering would be having a good boom in the technical field. So that is the reason I am right now learning this snowflakes for my own growth as well as for my own projects and what we say own development. Like we have talked about projects, so if you want in data analytics you can go through my project. I have this two project in data analytics for Python and SQL. Just if you want you can have a look in this project, and please do give your feedback because we have started talking about project, that's why. And anything, okay, we have one more query from Charles. I just not want to learn one language but learn different languages. Okay, do hackathons and ultimately don't want to worry about getting job, instead want to increase knowledge, and sorry for lots of question. Why to sorry, bro? I am here to sort out questions, so no need to be sorry. I am here. I would be really happy if you ask me more questions. Let me be very frank with you. I am here to solve questions, and we will be doing this for 12 hours straight. Like today is Saturday, so Saturday 12-hour live stream in my own channel until and unless my client don't call me for some work. So yeah, so as you have told, you don't want to learn one language, you want to be kind of having a basic to intermediate kind of level of knowledge in different language. Do hackathon and don't worry about getting a job. So what I am pretending, like if you are not worried about getting a job, you might be interested in teaching field, like you might be interested in doing coaching or might be interested in doing freelance work, then let me tell you one thing, it is okay, but please be prepared to make sure like whatever language, whatever programming language you are learning, at least have a intermediate level of knowledge into that. Let me tell you why. Because if you go to any field, suppose if you are going into coaching field, like becoming a tutor or teaching students about programming language, at that time at least you need to have a good amount of knowledge in programming field. Good amount means intermediate level. Advanced level, no worries, at least intermediate level you are having that much knowledge is good to go for teaching part, because you told you don't want to get into job. So and let me tell you one thing, you also told like related to hackathon and all. Yeah, this hackathon, if you do, that's a good thing. And let me tell you one thing, this can also give a good weightage in your freelance work. Like if you want to go into freelance work, like working for a freelance client, yes, these things will be adding a good and a positive weightage on your work. So yeah, go with it. But at least have an intermediate level of knowledge in all those language that you are interested to learn. I mean programming language. Okay, Charles, I am mainly preparing. Oh, sorry. Yeah. So we have one more query. Sorry, I am mainly preparing for Olympic weightlifting, high school dropout. Workout training is about like 3 hour max in a day for me. That's a good thing. Other 10 11 hour for me for want to invest this 4 5 years. Go, you can go with it, no worries for that. At least you are doing something good, you are not roaming around here and there and wasting your time. At least you are utilizing your time in a productive way. At least you have a aim, like you want to go into a weightlifting kind of sports. That's a good thing. You are investing time in this, like you told, 3 to 4 hour max. And
you are also want to grow in programming field as well. Programming field, I mean technical field. So that's a good thing. So no worries for that. Go good to go and invest. Like if you want to invest 4 to 5 years, yeah, that's a good thing. You can go for it. You can go for it. No worries for that. Okay, we have one more query. Like in 4 years, if I get into national, then don't have to worry about job. Then also I will be having free time. So calculating all, I have 14 years to learning to get a job. That's what I told you. Like I will pray to God that you achieve good heights in this sports field, because I am also into sports field. Malab not that much into national or state level, but if you ask me, I am a marathon runner. I go for running each and every day, like 10 kilometers run every day. So I am also into sports, and I know it is a good thing. So go with the sports, give time to that. Also you told you have some interest in learning programming language, so no need to worry about. You are in a good path. Go with it. Go with it. First, but let promise me one thing, you won't be hearing whatever negative things this world is saying to you. Don't hear any negative things from them. You have your own goals, you have your own path, you have your own aim. Just go with it, let me tell you that. Okay? Don't, because you know one thing in this field, because I have also faced that thing in this sports field and this kind of teaching field. People will put some negative things ki, there is no future, no this, no that. Let me tell you one thing, if you are into this field, please don't hear anything negative from the surrounding. People will say negative, but please don't hear about it. Just you have your aim, you have your focus, just go with it. Go with it, that's the thing. Just go with it, right? Okay, we have one more query. Like in programming, you can switch in different field easily, like cyber security. After having all this knowledge, see, cyber security, I don't have that much idea about it. One thing I know, in my previous company, there was a department related to that. I know that much, and I think coding is required. I don't know how much coding is required, but I think coding, I know coding is required. So cyber security, yeah, you can like, but let me tell you, as a fresher, at least you should first jump into getting a job in startup companies. Then you can aim, after having a good amount of experience, you can aim for MNCs. So that is the thing, right? Just worried about if nothing works, will this learning enough for getting a job? See, first thing first, for getting a job, at least in startup companies, have some skills. But let me tell you one thing, once you jump from see, simple thing, let me tell you, you won't be staying in a startup company for a long amount of years, right? Long amount of year means, I would say, at least 4 year 5 year max to that, because you also need growth in your life, you also need promotion. In this way, when you will be switching from startup to, I would say, to MNCs, at that time you might, you will be needing at least a bachelor degree. So that is what I'm trying to say. At least have a batch, like you told now you are a dropout, no worries, at least have a bachelor degree from correspondence course. That is also good to go, let me tell you that. Because for a bachelor's degree, MNCs are much more interested on those candidates who are having a bachelor degree, let me tell you. So skills are enough to get a job in startup companies, but once you are in a phase where you want to switch from startup companies to MNCs, yes, that time bachelor degrees is required. Okay? Hey, hi, be healthy, welcome to live stream. Hi, be healthy, welcome to live stream. How much I can earn as a data analyst? See, uh, in India, I'm saying, in startup companies, as a fresher, I'm saying this, because startup companies are mostly into hiring freshers. So for freshers, I would say you would be getting
of salary of 5 lakh to 5 6 lakhs CTC. Startup companies fresher, ठीक है. Once you have good experience, you will get lots of chance for getting a job offer or a job role, full-time job role in MNCs. So once you jump into MNCs like Infosys, TCS kind of thing, with experience, your salary will jump from a range of 7 lakhs to 8 9 lakhs kind of thing. But there is a catch, at least 1 year, at least 1 to 2 year of experience is required. Plus it depends how is your interview, because from your interview also this salary ranges create a big impact on it. Means interview creates a big impact in salary range as well, okay. And last but not the least, the FANG companies like Amazon and all, where I was working in Amazon. Once you have a good work ex, like more than 2 years, there will be kind of starting salary of around 15. Like at that time it was 15, in today's scenario it might be 18 kind of thing. So 15 to 20 will be the starting salary CTC for the FANG companies. Means for Amazon I know, because I was working in Amazon. I might not have that much knowledge of other companies like Google, Microsoft and all that. But in Amazon, as far as I know, maximum 20 is for the 2 years ka work ex, and it goes till 70, 80, 90. It goes till that. If you have good experience in Amazon only, that what I'm saying. So that is a thing. That's the earning package for data analyst. So any more doubt anybody have? They can ask me in the live stream.
Hello. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. Hi, Aniket. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Are you in India? Yes, I am in India working as a freelance gig, work from home. So yes, I am from India. What are you building? See, right now the thing is, I am preparing for a assignment thing which will be shared with you all. I mean, my viewers, live subscribers, and my I mean, viewers, live subscribers, and my live stream people. Why, one thing, because what I have received insights in the live stream, like people don't get time to practice SQL questions. So the thing is, once what I have decided, once I reach 1,000 subscriber, I will be sharing all the data set, all the assignment, and all the questions with you all, so that we could practice all this question side by side. Like I will be practicing the same question, and also same question you all will be practicing with the same data set and all. And let me tell you one thing, whatever data set I have here in my database, all are from either some freelance work, some kind of interview questions. So it is mixture of practical work and interview questions. So this is what I am just having a trial run. It is already built. If you can see my screen, I have already made everything till assignment 9, and I am just having a trial run, like is everything good to go and is everything okay with the questions. Like, do I need to modify the question a little bit, depends on the difficulty level. That's what I'm checking. So this is what I'm doing right now, and that is what it is. And if you ask about myself, I am a data analyst having a corporate work ex of 5 year and 5 months in worked in three corporate fields: Hindalco, Flipkart, and Amazon. And also I am having a eight freelance client work experience, means total 8 clients I have worked with in freelance field, especially in data analytics field. So 7 clients I have worked with them, done and dusted, given them all the insights, hand over them the project, each and everything. The 8 client I am working on right now. Not right now means on morning I have worked with them. Okay, had some meetings, given them some remaining work for the week, some dashboard creation and all those things I have done and dusted. So right now I just want to kind of preparing this assignment, taking care of the assignment. Everything will be given to you all once we reach 1,000 subscribers. So that's the thing. Uh, okay. Wow, you are so much hardworking. Thank you, thank you, Aniket. Thank you for your kind words. Thank you for that. Aniket, I want to ask you something related to software developer. Yeah, you can ask me, but let me tell you, I am much more inclined into data analytics. So I would be happy to help you that. But still, if you want, you can ask me related to that software developing thing. And let me tell you one thing, I have some friends in software developer. Means they are SDE in Amazon. Okay. So if you have any more doubt, you can ask me in the mail ID. I have this mail ID. Okay, I will ask the same question to my friends, so they can help you out in this. I am not that much inclined into software developing SDA and all. I am much more inclined into this data analytics part. I can help you in all this, but still, if you want, you can ask me. I will pass on your question to my friends, those who are SDA in Amazon. I mean, software developer level 1, level 2, level 3, SD 1, 2, 3, you might have known they are in Amazon. So I will pass on this question, your question to them, and whenever I get a reply, I will reply to your mail. And this is my mail ID. I have given the mail ID in this. So just be descriptive about your doubts. Ask anything you want to ask, and I will help you out. Okay? So that is all about it. And as you came to my live stream, so let me tell you one thing. If you want any project related to SQL and Python, it is an end-to-end freelance project. Okay? Like how freelance gig work for the freelance client. This is
Just a minute, guys. I just so I'm literally sorry about this. And right now I am back in the live stream again. So whatever doubt anybody have, they can ask me. Let me refresh it and let's see, do we have any more questions? Okay, we have one more query from Aniket. I'm really sorry, Aniket. I have to go in the midway. I'm really sorry about it. So we have one question from Aniket. Can you explain how to learn SQL from basic to advanced? I found it difficult. See, first thing first, let me tell you one thing. SQL does not need that much logic. Little bit of logic is required if you practice every day, even though that logic is not required. Let me tell you, because SQL is much more easier than anything, any software, or I would say any programming language. Although it's not a programming language, it's a query writing language, but still, how to learn it and how to go with it means kind of roadmap I can give you. Like first thing first, start with the basics. Okay, like I will tell you what I have did in my uh, learning stage when I was learning. Okay, simple, start with the basics. Like everything, start with the basics. Select where, order by, having, aggregate functions, like this. Okay, second, go with just kind of basic level 2. Basic level 2 means joins, group by, subqueries. These are basic level 2. Okay, once you are confident with this basic level 1 and level 2, explore intermediate and advanced topic. Intermediate means this Windows function, CTE, these are intermediate level. And inside this intermediate level, there is like in Windows function, you will be learning most of the thing about lead, lag. See, intermediate level in Windows function means rank, dense rank, row number, everything. Like let me show you one thing. What intermediate level is it? Let this one. If you can see my screen, this
Where is it? Yeah, this is the thing. This is the intermediate level. Means Windows function, dense rank, row number, rank. These things are the intermediate level that you can see on the screen. Okay. And once you are done with the intermediate level, move to advanced level where you will take care of lead, lag, rows between unbounded preceding current rows, like this kind of thing. Once you are having a good grip on all those topic, whatever topic I'm showing you right now, that is from basic to advanced. Once you have a good grip on this, directly do not jump into project. First thing first, do some question from this datalamer.com and SQL Zoo. Let me check once. SQLZoo.net. These two are the websites you should go on and practice questions. Why I'm saying this? To practice these questions from this, do not jump to lead code also. Start with data lemma and then SQL Zoo. Why I'm saying this, once you sit in the interview na, they will give you some case study kind of question, and those case study kind of questions are into a UI based, matlab I would say online SQL query wala UI will be there. So to get acquainted with this thing, I would say practice questions from data lemma and SQL Zoo. Once you have a good grip on this, jump to projects. Projects, how you will do project, Aniket? Let me tell you. Project will be done in such a way so that you cover all the work in all the domain field. Why I'm saying this? Means example, like in banking domain, you do 3 projects, 3 to 4 project. Retail, you do 3 to 4 project. E-commerce, you do 2 3 project. Like this kind of thing. Why I'm saying, in near future, when you will be start applying for a job role, job vacancy, and when you see, suppose example, HSBC or Axis Bank have shown an vacancy for data analyst. Like, data analysts are used and they are having vacancy each and everywhere in each and every domain. Suppose some banking sector like HSBC, American Express, they give out a job vacancy in their company. At that time, what you will do? You will just tailor your CV in accordance to the job applying the domain. I mean to say, in banking domain, they will have the ATS set in banking platform only. Means all the keyword will be based on data analytics plus banking. So in that way, if you tailor your CV by putting all those banking wala project in your CV, good projects in your CV, you will have a higher chance that your CV will get picked up from the recruiter point of view. Okay. Second thing, suppose Walmart or kind of Amazon you take, Flipkart you take, like this kind of companies, when they start giving out vacancies, means start showing their vacancies, job vacancy for data analytics. In that time, you can give your e-commerce and retail ka project in your CV. So in this way, what will happen? You will get a good chance that your CV get picked up through the ATS, and it will pass through the ATS and it will get picked up from the recruiter point of view. So in this way, you will get a benefit from this. Okay. Second thing, what you can do, you can post your projects in your online platform like LinkedIn. So with proper keywords like hashtag SQL, hashtag Python, hashtag data analytics. In this way, what will happen? The recruiter can get to know about your post, and they will read about your project. How they will read about your project? They can read about your project through the problem statement and the approach that you might have written in the post. So in this way, they can also match out like their vacancies, required skills, and your project requires skills. If these two are matching, then yeah, you can get a good chance that your CV will get picked up, or you might get a DM through LinkedIn from the recruiter, and there is a chance that it might convert to an interview. So that is what I'm trying to say, and this is what the roadmap what I have followed. I have found success,
and this is what I am sharing it to you. So please follow this roadmap for SQL. And yeah, it is not that difficult, let me tell you. At See, at starting stage everything will be difficult because we are on a learning stage, and once we have a good practice and good grip on those logics, and we remove all those fear of creating mistakes by seeing the question, let me tell you one thing, confidence will build up, and once confidence get build up, difficulty will leave the room, let me tell you that. So no worries for that. And this is what roadmap what I have followed and what I would suggest to everyone to follow. Okay, that is what uh, the roadmap is all about for SQL. So any doubt anybody have in the live stream?
So we are ending the poll here, and we have seen most of the people have given today's weekend just sleeping. Yeah, actually everybody should need rest. So please take proper rest. Take the I mean utilize the time for resting your body and mental peace as well as that's a good thing, let me tell you. So take rest, but here comes the second question. Like, it's a good question, I would say. Question is, which social media platform do you use the most daily? Let's see what answer do we get for this. So let's see how many answers do we like. What is the mostly preferred social media website uh, for today? I mean today's weekend. Let's see. What do we get answer for this?
Yeah. Hello. Hello. Yeah, it's good. Hi, Mayank. Uh, Welcome to live stream. Welcome to live stream. Welcome to live stream, Mayank. Okay, we have one query from Mayank. Like, can you please let me know how do you got this as a freelance work? Where did you register or apply? See, first thing first, if you ask me where did I got it, I have not registered in any website or like any particular or specific website for freelance work. I have just like if I would say about my first freelance client, I have just started searching about the client with the work that I know or the skills that I know from Reddit. Okay, so whatever client I have received till date means till date I have worked with total 8 clients. Means 7 clients I have worked with total 7 clients. It's already done, dusted, hand over them the project, everything done. 8 client I'm working on right now. But if you ask me about the total 8 clients, 7 clients were from Reddit, one client is from LinkedIn. And how do I search it? Just go to the search tab and search for freelance SQL, freelance Python, freelance, only freelance, freelance data, freelance analytics, freelance MIS, analytics, like this. I search whenever I get a post or whenever I get any related post to this keywords. I just go into that post and see like whatever requirement they need. Sometimes the clients say to write about the requirement or your skills or your interest in comment section. Sometimes clients have their mail ID. Sometimes client, uh, let me tell you, have kind of their DMs open. Some don't have their DMs open, like they keep it private. Most of them have their DMs open. You have to just go do a cold messaging them, send them a cold email, write a comment like you have this skills. If you are happy with it, can we connect? Like this kind of you do. Out of so many hit and trial, any one or two of the client can get converted into your job role. So this is what happened to me. If you ask me, yes, two of the platforms like Reddit and LinkedIn worked out for me a lot of time. So LinkedIn, if you ask, yeah, one client, Reddit, total 7 clients. So I would give first priority to Reddit, second priority to LinkedIn. So this is where I have searched my clients. And if you ask me for more broader or more uh, way or pathways to get clients, I would say you can go to freelance.com, Fiverr, then Upwork, like this. So you can go for that. Okay? If you ask like if you ask for different freelance client, yeah, they might have say different sources where they have got client. For me, Reddit and LinkedIn. Okay? Mayank, thanks. This was helpful. Yeah, welcome, brother. Welcome. Yeah, hi Divyam. Welcome to live stream. Hi Divyam. Welcome to live stream, Divyam. How are you? Mayank, we have one question from Mayank. Like I already registered on Upwork and True Answer, but not getting any project. Will try on Reddit. Yeah, see, let me tell you one thing. Like I've told always, like it's an hit and trial method. You have to beat around the bush each and every day. One or two will get converted, but you have to do it. That's thing, because we have one thing in our hand, that is trying. We will try. Due to God grace, due to good luck, it will convert, but we have to try. That's it. If we sit and we say no, it is not getting converted like this, there won't be chance that you will get a client. But yeah, if you try every day, be consistent, chances will be there to get a good client, freelance client. So just try. That's it. Be consistent and try. That's it. Nothing else. This is what this is what worked for me, and this is what I give suggestion to everyone in my YouTube channel or in email. Like I get mails for that as well. So this is what suggestions I give, because this is tried and tested from my own side. So yeah, that's the thing.
So that's it. And anything anymore? Okay, we have one question from Divyam. Acha, this related to Mayank. Okay, okay, please help out. And Mayank, let me tell you, Divyam is also one of our freelance gig. He is also dealing with freelance client. So Mayank, you can connect with Divyam and he can help you out as well. So please talk, send your connection, connect each other through any medium like LinkedIn or mail. So just give me 2 minutes. I'm just coming from work. Just 2 minutes.
Hey, hi Sid, welcome to live stream. Hi Sid, welcome to live stream. How did you get this data set and this assignment PDF, bro? I have not got this data set from anywhere, but you can say I've got this data set from my previous kind of Reddit search kind of thing when I used to practice at that time. Practice in the sense during 2017-18 times. At that year when I was practicing, I have downloaded some data set at that time, so I have just revived that, use it, some different kind of data from here and there, like from LinkedIn, from some kind of I would say interview questions like this. I have attached each and every data from here and there and made the data set. Means there is not one data set, there are around six data set which you will be working on this assignment. And this assignment PDF is created by me. How I have created, same thing, some are interview question, some are practice question from internet, and some are questions which I have created from my own site, like just to take clearance of the basics part. So this is what I have done in this assignment, and you will get this assignment plus data set for practice. Like you can check this as well. I have made this assignment ka practice का concept वाला part, where you can see what assignment is having, what concept is covered and all that thing. So it is fully, all the questions are based on these things. Some are interview question, some are kind of, I would say, from here and there, like from the internet, from LinkedIn. Some are from my side, because from, see, as I have experience in this, I know what kind of things we have worked on. So some are from my side, from my work ex, if you can say that, it would be better. Some are from my work ex. So all these things are done. And this data set is mixture of all those practice set which I had practiced during the 2017-18 times, plus today's latest data set, plus something related to Reddit ka data set, LinkedIn ka data set, interview questions ka data set. So it is mixture of all these things. If you say me, yeah, I have not made this from my own side, yeah, but I would say one thing, I have put some effort on searching this data set. Mixture part, or I would say modification part, I had done from my side. And question, yeah, I, some questions are from my side, some are from interview, some are from, like I would say, internet, Reddit, some from XYZ website, like this. So it is mixture of all those things. You will get all those things once we reach 1,000 subscriber. Actually these things are for you all people only, because I have got a lot of query in my live stream that people don't get that much time to practice for SQL and Python. I can understand this, because mostly people are into working, or they are college going viewers and subscribers. So I can understand it, like bringing or taking out time from that busy schedule is tough. This is the reason I have created this assignment, and we will do two live stream once we reach 1,000 subscriber. Two live stream, why, you know? First live stream is for the practice session, where we will practice for the assignment every day. Every day practice will be there. And second session will be doubt session and normal live chat session. Like you can ask me doubts from XYZ, like SQL, Python for data analytics, project, anything you can ask doubt. Plus this assignment doubts will also be cleared. So two live stream we will do once we reach 1,000 subscriber. All this data set will be given to you through my Google Drive ka link. Like if you have seen my project, I have, like I have given all those data set through Google Drive link. I will give the access to each and every data set here. Just you need one thing, your SQL environment and your Python environment, and you are good to go. Okay? Nothing much. Yeah, but also some knowledge of SQL and Python. So that's the thing, and this is my mail ID. If you have any doubt related to anything related to SQL, Python for DA, you can ask doubts here. So this is the thing, and in this project also you can see this is in a playlist version. ठीक है ना? SQL and Python project. So this project is all about, I would say, end-to-end freelance project, like how we deal with the freelance client, full communication, like
mail communication is there, insights, how do we work on the insights, statistics, each and everything. So it is fully operated on this. So that's the thing. So hi Harish, welcome to live stream. Hi Harish, welcome to live stream. I was following your tutorials and now stuck at join SQL. Like, can you tell me like which joins? I mean, say left join. I have mostly used left join, self join, inner join, full join. Mostly I've used this, whatever I remember. So if you can say what kind of join, I can help you out in this. Okay? Said okay. We'll wait for that. Yeah, sure, sure. Thank you, bro. Thank you. I'm also like waiting for this 1,000 subscriber. Once it gets into, I will also pass on this whole data set, each and every questions to you, so that you all can also practice and like prepare yourself for interview. So that's the thing. And Harish, like, can you say like what which doubt uh, are you asking? Like which joins? Main which one? Like related to? I would say left join, inner join, or only join, anything. So you can ask anything. You can ask me. I can help you out. Just it's good. Okay. Okay, we have one query from Harish. Like, I cannot understand this join function. Never been able to try any. See, joins are all about. Let me tell you one thing. Joins, you know what? Just two tables, connecting two tables with a common column. That's it. This is layman's language word. Simple layman's language word. Harish, I am saying. Take two tables. Okay? Connecting two tables from a medium. How in what medium you will connect two tables? In a single medium where some data is common, like some data is on table A, on a second data is on table B. ठीक है? Out of this two tables, some or the other thing will be common in both. ठीक है? जैसे बोलते हैं ना mutual friend, like Harish and me, Shubham. Suppose we have a mutual friend, Sid. Suppose. So how do we connect with each other? We will say कि अच्छा Sid is our mutual friend. In this way, me and Harish can connect each other. So this is the thing. Joins is the same thing. Two tables are there. Two tables are connected with the mutual data. So that is the thing. And if you ask me on a proper basis, I would say like think properly. Like it is a longer version kind of thing. If you have two tables, a join just connect the rows where the column matches. Example, one table has customer info, another has orders. So join them on customer ID to see which customer made which order. Like I am saying from this, the data set or the assignment I am practicing. Okay. So join them on customer ID to see which customer made which order. Like if you start with inner join, like only the matching one, like I have told you, Harish and Shubham are having mutual friend Sid. So when you do inner join, only Sid will come in between because Sid is common in the two. So that is the thing. That is the matching friend or mutual friend that is in between. And in this way we can connect. So inner join comes like this. ठीक है. What is left join? Left join, suppose Harish and Shubham, in that Sid is common. So left join is, suppose Harish is the left table. What will come in output? All the friends for Harish plus Sid. This all things will come in left join. It is like that. Full join, all full join, what will happen? All the friends of Harish, all the friends of Shubham plus Sid. This all things will come in the output. So this, it is like that. So this is how joins mean. If in a layman's language I can say. Let me tell you, if you are not able to understand, I would say start practicing some basics question. ठीक है? Like SQL zoo is there. SQL zoo, let me
give you the website. sequelzoo.net करके एक है this website. One of our viewers and subscribers have told this, like Divyam, he might be in the live chat, might be. So he have told this, and it is a good thing. In this, each and every part, or I would say each and every topic is having questions from here. So anybody wants to practice question from the only logic or concept part, they can try this website. Like if you want to work out on only joints part, so click on joints, you will get questions and you will work out on that. Okay, so go with it. I would say highly recommended. I have seen and it is a good website. Okay, we have two messages from Sid. You should increase the font size of PG admin. Actually, it is means font size of PG admin in SQL. Na, yeah, it was a mistake actually. Let me tell you why. Because in the freelance project, in the SQL, actually the font size was very less, and I got feedback from most of them to increase the font size. Same thing I did in Python. I have increased the font size in Python, if you could see. And the latest project that will be launched on 1st October about the Excel project, in that also I have increased the font size. So actually, I am new to YouTube, so I will make mistakes, but thanks to everyone's feedback, and I encourage everyone to give me feedback from the project so that I can learn from my mistake. So yeah, that was the first mistake that I did in SQL project. Font size was very small, due to which people have faced issue, but no need to worry about. I will take care of this from next project. Like I have to care also, like for Python, and next Excel project will be launched on 1st October. So this things I have taken care of, and in near future all the projects will be in good quality fonts and enlarged font, I would say. Your freelancing project was very helpful. Thanks. Yeah, welcome brother, welcome. Thank you for that. Thank you brother. Thank you for the feedback, I would say. So we have one query, Harish. I have fever. I am sleeping to your music. Okay, yeah, please, please, sure, sure. I'm switching on the music. I'm very sorry. I've actually closed it. Thank you. Like, take care. Why I'm saying thank you, I don't know. Please take care, Harish. Take care of your health, because right now there is a season change, and in season change, yeah, health issues will be there. But please take care, Harish. Take care of your health.
So we have one query from Sid. How do you get freelance project? Can you share few tips? Like freelance project, I would say if you ask me, I have got freelance project from Reddit and LinkedIn. Just go to the search bar and I used to search freelance client, SQL freelance client, data analytics, freelance client, MIS analytics, freelance client, Python libraries. Like this, I used to search whatever post I used to get. I used to read the post, whatever instruction has been given. Like some of our clients say, ki directly mail us through the mail ID. Someone has opened their, I would say, DM section, and they would say, ki please DM us your skills or CV, whatever you have, we can connect. Or someone would say, write in the comment section, we would see your comments and we will have a call if it is matching our requirement. Like this kind of thing has happened, and this is how I used to search. Like Reddit and LinkedIn has worked for me. But if you ask me how to search, I would say Reddit, LinkedIn, freelance.com, Fiverr, Upwork. Go through this platform, ठीक है? Because for me these two have worked. That doesn't mean that for you these two things will work. I would say you should try to each and every roadmap or path whatever is open for you for the freelance work. So it is not like you should be limit yourself to Reddit and LinkedIn. There are lots of pathways, there are lots of, I would say, medium where you can connect to freelance clients. So it is better to apply to each and every website and get touch with the client. So that is my tip for you.
Hello, bro. Hello, Charan. How are you? Yeah, hi Charan. Okay, got a problem. Yeah, please share your issue. Like any issue you have, you can share it here in the live stream. You can share the issue in the live stream, or if you want, you can share me in the mail ID. Anywhere like you are flexible with, you can share it. So, like I have planned to do a project in SQL. It has 8 table. I cannot import it with using wizard in my SQL cause it always slow and progress bar never get moved. Yeah, I know. The same for PostgreSQL. That is the reason I have created this kind of create table and insert into for all the 6 table which I have done. So it will work out in that way. But let me tell you one thing. You can do it in like create table and insert into if you want to. You can do it like that. Like I have done the same thing, create table, insert into, then it worked out.
This is kind of okay. Yes, I'm creating table structure with import wizard and importing data with load data file and placing all the files in the data in local MySQL server 8. Let me tell you, in this Excel file there will be a issue. That is the reason. Do one thing, right? Create table, insert into query and do it. It would be better. But it is taking lot of means even though in create table and insert into it is taking lot of time, kya? Like create table, writing query like this. Create table and insert into query. By writing this create table and insert into query, is it showing problem in this? Like you can do it like that because I have done the same thing for it. I mean for the create table, insert into and all these things. Bro, the table has 1 lakh rows. Let me show you one thing. Hmm. Then if it is the thing, you have to take care of directly importing it into using the import wizard, I would say. Because 1 lakh rows, I thought the table will be small. That's why. If it is having that issue, then it is better to write, I mean, better to import, use this, I mean, import wizard and importing data by that load data process. You can do it. It will take time, but what we can do? Like you told, 7 table you have imported, nah? So one more table is there only. You can do it properly. It will take time, I can understand, but that's the thing. Just a minute. Like you have told, you have done the 7 tables you have imported, right? And so one more table only left. You can do it in this. Feedback and cache. Your table is here. Sales data. Sales data. I would say you should use the wizard because 1 lakh table and rows. It I know it will take time. So many lots of datas are there. I can understand. And at least you have done imported the 7 now. So one more is left. You can do it. And writing, I thought it's a small table. That's why I told to write a query like create table and insert into query.
Same thing.
Hey, hi Harish, welcome to live stream. So, how was your sleep? You came back, nice. I hope you are okay right now. You take the medicine and take rest. ठीक है? Okay. So we have one query from, sorry, two queries from दिव्यम भैया. If possible, कोई फाइनेंस रिलेटेड डेटा शेयर कर सकते हो क्या? टाइम सीरीज वाला देखना पड़ेगा भाई. मैं खुद खोज रहा हूँ टाइम सीरीज वाला जो, आई मीन नॉट टाइम सीरीज बट फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, इसीलिए मैं खुद खोज रहा हूँ. मिलेगा तो आई विल मेक इट. अगर नहीं मिलता है तो खुद बना लूंगा छोटा मोटा कोई टेबल डेटा सेट, और मिल जाएगा तो आई विल शेयर विथ यू. तुम्हारा मेल आईडी है मेरे पास, नो वरीज फॉर दैट. ठीक है.
Hello, hello, hello. Yeah, okay, Divyam, just a minute. So we have two queries from Divyam Bhaiya needed a suggestion. Uh, shall I try for full AI marathon for next month or data analysis wala considering everything? Like my juniors told me कि उनका job market भी full हुआ है. So don't know which would be better or even useful. That's the correct thing. Job market अभी तो at least startup companies में तो ठीक है, but let me tell you, as far as experience you have, I think आपको तो MNCs में जाना चाहिए, no doubt for that. Like AI marathon, like is it all about coding और क्या मतलब कोडिंग वोडिंग रिलेटेड रहेगा क्या उसमें जो आप बोल रहे हो AI मैराथन जो रहेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, इज इट रिलेटेड टू दैट? My, let me tell you one thing, if it is something new to learn, you can learn that thing. मतलब AI मैराथन जो आप बोल रहे हो, if it is new thing to learn, then you can go with it, but make sure आप अपना मेन डोमेन डेटा एनालिसिस में ही रखो. AI वाला अगर सीखने का कुछ है तो यू कैन लर्न, लेट मी टेल यू दैट. Yes, coding wala. If it is something new, then yeah, you can keep it. At least you will be. Why I'm saying this, Divyam, कि at least आपके पास डेटा एनालिटिक्स का तो नॉलेज है, प्लस AI मैराथन रिलेटेड जो भी कोडिंग रिलेटेड जो भी है उसमें at least you will get a good knowledge plus a good experience. So anyhow, it will add a good, I mean, क्या बोलूँ उसको, good or a positive thing in your CV, resume or your experience. ठीक है ना? तो लाइक आपको अगर डेटा आप जैसे पहले बोले थे डेटा साइंस में यू आर, बट आई थिंक यू वांट टू बी डेटा साइंस, आप डेटा एनालिसिस लिखे हो. तो तो डेटा साइंस में तो एआई रिलेटेड काम रहेगा. तो व्हाट आई कैन रिमेम्बर, लाइक यू टोल्ड डेटा साइंस, आई एम कंफर्म लाइक आपने डेटा साइंस ही बोला था. तो एआई रिलेटेड जो है यू कैन गो विद दैट. एटलीस्ट यू विल be able to grasp something new, learn something new from my suggestion. Baki it's depend on yours. Let me tell you, last call will be yours. Okay, we have 2 3 more queries from Divyam. I saw a startup post yesterday. Okay, it had 500 people in an hour. Yeah, right. वो तो भाई LinkedIn में I told you ना, lots of competition is there today in data analytics field. क्योंकि इसमें ज़्यादा कोडिंग वोडिंग का ज़रूरत पड़ता नहीं है. लॉजिक उतना नहीं लगता जितना आपको C++ जावा में लगता है. यू ऑल्सो नो दिस. ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग उसमें हैं. दैट इज़ ऑब्वियस. ठीक है. या कोडिंग वाला ओके. लाइक एआई मैराथन में इट वुड बी मिक्स, आधा आता है आधा लर्निंग. मेरा एनालिसिस से ज़्यादा साइंस में है ना यार. हाँ, दैट आई टोल्ड यू, दैट ओनली आई टोल्ड यू इन फ्रंट. मतलब पहला मैसेज में आई जस्ट रिमेंबर, जस्ट स्ट्राइक किया कि आप डेटा साइंस में हो, फोकस रहते हो. तो इसलिए मैंने बोला कि एआई रिलेटेड जो आप बोल रहे हो एआई मैराथन, यू कैन गो विद दैट. मेरे को जस्ट स्ट्राइक किया इसलिए, मतलब मैं डेटा एनालिसिस पढ़ा, बट स्टिल मेरे को एक जगह स्ट्राइक किया था कि आप डेटा साइंस रिलेट, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट भेजा था मेरे को रिलेटेड टू द ग्राफ्स एंड ऑल, मतलब विजुअलाइजेशन एंड ऑल, सॉरी. तो उसमें मेरे को जस्ट स्ट्राइक किया, सो आई टोल्ड यू दैट एंड यू हैव आल्सो टोल्ड इन द लाइव चैट, सो इट्स ओके ना. लाइक साइंस में सिर्फ एमएनसी है ना. अभी मेरा प्रोबेबली विल गो फॉर जॉब नेक्स्ट ईयर, सो वॉज क्यूरियस. देखो, एज यू ऑल्सो नो, जॉब मार्केट इज नो डाउट फ्रीज तो नहीं बोलेंगे, बट या इट इज ओपन. कंपटीशन इज ह्यूज राइट नाउ. सो आई वुड से इट इज बेटर टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू एआई जो आपका है एक्चुअली. जैसे कि आपको पता है डेटा साइंस में AI ML इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेटा साइंस. सो इफ यू आर हैव एंड यू हैव टोल्ड कि आपको आधा नॉलेज है आधा यू आर गेनिंग, तो यू कैन गो विद दैट, आई वुड सजेस्ट.
क्योंकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एंड जस्ट लाइक इफ यू टेक माय एग्जांपल दिव्यम, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा एनालिसिस में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मतलब मैं बोलूँ नॉलेज है, ठीक है। एंड फॉर माय ओन ग्रोथ आई एम ऑल्सो लर्निंग स्नोफ्लेक्स साइड बाय साइड, ठीक है। स्नोफ्लेक्स का भी मैं पढ़ रहा हूँ, इवन दो मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है स्नोफ्लेक्स रिलेटेड, आई मीन बिग डेटा रिलेटेड उसने कुछ बोला नहीं है, बट स्टिल आई एम लर्निंग, क्योंकि आई ऑल्सो डोंट नो कि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है कि नहीं। सो आई एम गोइंग इन दैट फील्ड, मतलब डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड ही है स्नोफ्लेक्स, आई मीन टू से सीक्वल के सारे क्वेरीज जो आप लिखते हो स्नोफ्लेक्स में भी हो जाएगा, और स्नोफ्लेक्स अगर आप सीख जाते हो तो यू आर काइंड ऑफ अ डेटा इंजीनियर। तो जैसे कि मैं अपने फील्ड से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, और अपने फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जान के दूसरे डोमेन में जा रहा हूँ, विच आई मीन टू से मेरे फील्ड का जो रोड है दैट इज कनेक्टिंग टू डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आई नो कि मुझे जितना नॉलेज है और जो सीखना चाहिए, इट विल हेल्प मी टू ग्रो इन अ डिफरेंट डोमेन एज वेल। तो आपके फील्ड का जो पाथ है, रोडवे या फिर रोड मैप है, दैट इज समहाउ कनेक्टिंग टू AIML, because as everybody knows, that's the fourth pillar of data science. So what I would say, yeah, you can go with it, क्योंकि anyhow आपका जो पास जो knowledge है data science का, that will be used, plus you will gain some I would say plus points by learning this AI marathon, या तो AI marathon का जो भी आपका learning phase रहेगा, तो I would say you should go with it, ठीक है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी योर लास्ट कॉल, मतलब लास्ट कॉल आपका रहेगा, ठीक है। मैंने जस्ट अपना एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैं डेटा इंजीनियरिंग में क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो डेटा एनालिसिस वाला रोड है, इट इज़ कनेक्टिंग टू डेटा इंजीनियरिंग, आई मीन टू से डेटा इंजीनियरिंग में स्नोफ्लेक्स यूज़ होता है, एंड स्नोफ्लेक्स में सीक्वल के ही क्वेरीज लगते हैं, तो एनी हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेम रोड। सो आई एम गोइंग थ्रू दैट रोड, जहाँ पे मुझे एक डोमेन का प्लस, क्या बोलते हैं उसको, प्लस पॉइंट्स मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो दैट इज द थिंग। So this is how I am connecting myself with your situation. So this is just an example what I have given, but at the end आपको जो लगता है आपका मार्केट सिनेरियो और आपके सराउंडिंग में, यू शुड गो विथ इट। बट जैसे कि आपने सजेशन पूछा, सो दैट्स माय सजेशन फॉर यू फ्रॉम माय एग्जांपल, ठीक है। मैंने अपना भी एग्जांपल दिया सो दैट यू कैन कनेक्ट इट प्रॉपरली, बिकॉज आप और मैं एक ही काइंड ऑफ इन्वायरमेंट से ही बिलोंग करते हैं, फ्रीलांस इन्वायरमेंट प्लस डेटा रिलेटेड इन्वायरमेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन माय ओन एग्जांपल। तो आई होप आपको यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर दैट। Okay, we have three four queries from Divyam, thanks यार। मेरा रैक तक क्लियर है, विल ऐड मोर। AI में भी यूज आता है स्नोफ्लेक्स का? नो आइडिया भाई, मैं तो अभी जस्ट थ्योरी पार्ट में ही हूँ स्नोफ्लेक्स के लिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इधर उधर से पढ़ रहा हूँ मैं, तो इवन तो देख रहा हूँ स्नोफ्लेक रिलेटेड यूट्यूब में सब 2 आवर 3 आवर का ही वीडियो है, कोई उतना डीप डाइव नहीं है। लेकिन डेटा एनालिटिक्स टाइप करूंगा, मेरा मतलब वो वो यूट्यूब पूरा भर जाएगा डेटा एनालिटिक्स से। तो एक चीज मैं नोटिस क्यों, एक तो स्नोफ्लेक, आई मीन सॉरी, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस में इट इज टफ, नो डाउट इट इज टफ, इसलिए ज्यादा लोग जाना नहीं चाह रहा है, बात वो है। या फिर मे बी वो इतना क्या बोलूं, बूम में नहीं है अभी। डेटा एनालिटिक्स बूम में है, क्यों? क्योंकि इट इज इजी। सीक्वल पाइथन, लेट मी टेल यू, वेरी इजी, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ भी नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन डेटा इंजीनियरिंग में स्नोफ्लेक्स चाहिए। और एक बात बताऊं, जो मैंने अपने पार्ट में रिसर्च किया है, स्नोफ्लेक्स फ्री में नहीं है, यू माइट बी नोइंग दैट। मतलब क्या है कि जैसे सीक्वल पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है, ठीक है, एनीबडी कैन डाउनलोड यूज इट एनी टाइम, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप जैसे ही जाओगे इसमें, क्या नाम है इसका, क्या भूल गया, स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स में या तो 1 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो 4 महीने का। उसके बाद
it will be like $400, which is around, अगर 90 रुपीज़ में माने, 9 4 जा 36, 36000, मतलब 36,000 40,000 का आपको खर्चा करना पड़ेगा जस्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर वेर यू विल राइट क्वेरीज। तो इसीलिए डेटा इंजीनियरिंग में लोग नहीं है ज़्यादा, सिंपल सा बात है। बिकॉज उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू बाय स्नोफ्लेक इन्वायरमेंट या तो स्नोफ्लेक वाला सॉफ्टवेयर। अगर बाय नहीं भी कर रहे हो तो भी चलो 1 महीना ही आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस तो हर दिन करना है। दैट्स द थिंग। और रही बात डेटा साइंस का, डेटा साइंस के लिए मैथ्स का ज़रूरत है। ठीक है, मैथ्स पता नहीं लोग कौन से जन्म में पढ़े होंगे, आई ऑल्सो डोंट नो। कि मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं किस जन्म में पढ़ा था मैथ्स, आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर। अभी अगर मेरे को डेटा साइंस में जाना पड़ेगा तो मेरे को मैथ्स का फिर एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करना पड़ेगा from government website. Like you know ना, we have free NCERT downloadable books from government website। डाउनलोड करूँगा, फिर बेसिक्स पढ़ूंगा, बेसिक्स के बाद फिर थोड़ा एडवांस 11 12 का, फिर जाके मेरा डेटा साइंस में कुछ पल्ले पड़ेगा काइंड ऑफ। तो हियर इज द टफ पार्ट, मतलब बैरियर्स जिसको बोलते हैं ना, डेटा इंजीनियरिंग का बैरियर आपको समझ में आ गया, स्नोफ्लेक का पेड सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। अब आते हैं डेटा साइंस का, वहाँ पे पढ़ना है, मेहनत लगेगा, फिर से यू हैव टू स्टडी व्हाट आई थिंक। तो दैट इज द थिंग कि डेटा साइंस के लिए भी देख रहा हूँ बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब में। सो लेट मी टेल यू दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप उस लाइन में जा रहे हो ना तो एटलीस्ट आप नॉलेज दे सकते हो दूसरों को अपने यूट्यूब वीडियो से, एटलीस्ट बट नॉट बाय शोइंग फेस, नॉट बाय शोइंग आइडेंटिटी। यू कैन गिव नॉलेज एंड इट विल बी अ गुड थिंग। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास नॉलेज है सो यू शुड शेयर इट, लाइक यू आर डूइंग इट। आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल अभी उतना नहीं है कंपटीशन यूट्यूब मार्केट में, सो यू कैन गो विद इट। उसमें डेटा कैंप हैव गुड स्टफ। डेटा कैंप करके फ्री, डेटा कैंप ना फ्री कोड कैंप करके कुछ एक है, सब में खोजा भाई। स्नोफ्लेक्स का 2 से 3 घंटे का ही मेरे को मिल रहा है वीडियो, और उतने वीडियोस नहीं है। लेकिन सीक्वल खोजूंगा तो पूरा मिल जाएगा मेरे को, मतलब जितना मिलना है मिल जाएगा। मे भी होगा, आप जो बोल रहे हो डेटा कैंप में थोड़ा मेरे को डीप डाइव करना पड़ेगा उनके पेज में जाके, मिल सकता है। बट वही है ना कि 1 या 2 वीडियो रहेंगे, नॉट लाइक सीक्वल। सीक्वल में जैसे आज के डेट में हर लैंग्वेज में वीडियो है, मतलब आप मराठी लैंग्वेज में जाओ उसमें भी आपको सीक्वल के वीडियोस मिल जाएंगे। आप एनी लैंग्वेज में जाओ, उड़िया लैंग्वेज में जाओ, उस लैंग्वेज में भी मिल जाएगा आपको सीक्वल वीडियो। क्योंकि इतना इतना वो बोलते हैं ना उसको, बूम में है वो। लेकिन वही बात है कि थोड़ा देखना पड़ेगा और क्या। ना भैया इतना भी नहीं है। अच्छा आई थिंक आप उसका बोल रहे हो क्या, क्या बोलते हैं, आ, नाम भूल गया यार, स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स उसका बोल रहे हो ना। मतलब आई डोंट नो, बट मैं जितना सुना हूँ उतना, थोड़ा मैं जितना सुना हूँ हाई लेवल में चाहिए। अब हाई लेवल मतलब किस बेसिस का हाई लेवल, दैट आई डोंट नो। मैं बस पढ़ा था कि चाहिए करके। अब आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, सो दैट्स द थिंग। उनके प्लेटफॉर्म में 10K का कोर्स है, लाइक 10K में बस कुछ है। ओके, लेट मी चेक देन क्या है उसमें। पहले मैं अपने साइड से थोड़ा एक बार पढ़ूंगा, जो कि पढ़ रहा हूँ स्नोफ्लेक्स के लिए और बिग डेटा रिलेटेड चीज़ के लिए। उसके बाद फिर कोर्सेज तो मैं भी खरीदूंगा, मैं भी देखूंगा कि कहाँ क्या एग्जाम्पल है क्या है। देन लेट मी टेल यू, आई प्रॉमिस एवरीवन, मेरे पास नॉलेज आ जाएगा तो आई विल टीच यू एवरीथिंग। मैथ्स का जो एमबीए में रहता है ना, उसका आधा, भाई एमबीए का मेरे को खुद कुछ समझ में नहीं आता है। उसका आधा मतलब अब तब तो एक्चुअली टफ है, मतलब मेरे लिए तो टफ ही है बोलूंगा मैं तो। क्योंकि एमबीए का मेरे को पता है मैं कैसे पढ़ा पढ़ा है एमबीए के लिए। क्योंकि एक तो पढ़ाई छूट गया था 1 साल 6 महीने के लिए, फिर एमबीए किया है, एमबीए के बाद अब फिर पढ़ाई छूट गया है। पढ़ाई छूट गया मतलब टेक्निकल पढ़ाई तो है ही है लाइन में, नो वरीज फॉर दैट, बट रिलेटेड टू मैथ्स एंड ऑल मेरे को लगता है मेरे को मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा वापस से, जो कि मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब में। मैं तो सारे वीडियोस प्राइवेट किए हुए हैं इस चैनल में, जो कि जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाता था। आई होप यू कैन
मैं सोच रहा हूँ उसको पब्लिक कर दूं, एंड यू विल सी मी व्हेन आई वाज यंग इन अराउंड कितना 2019 2020 का टाइम, दैट टाइम व्हेन आई ओपन दिस यूट्यूब चैनल। तो उस टाइम एनसीईआरटी मैथ्स का पढ़ा रहा था, सो इफ यू लाइक आई विल डू इट पब्लिक, देखते हैं। नहीं, लाइक इफ यू वांट आई कैन शेयर टॉपिक्स। हाँ, टॉपिक शेयर, डेटा साइंस का। एक्चुअली मैं तो डेटा उसके लिए पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन शेयर मी द टॉपिक फॉर डेटा साइंस। ठीक है, नो वरीज फॉर दैट, आप शेयर कर सकते हो। इफ़ यू हैव फ्री टाइम तब आप कीजिएगा, क्योंकि अभी के उतना मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बट हाँ फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा। आई विल गो थ्रू द मेल एंड चेक इट आउट। तो दिव्यम, इफ़ यू हैव फ्री टाइम आप सेंड कर दीजिएगा मेरे को सॉरी। ठीक है। एंड तो दिव्यम एक चीज़ बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो है, एटलीस्ट पढ़ाने का अपॉर्चुनिटीज़ है दिव्यम, लेट मी टेल यू दैट। अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हो तो एटलीस्ट पढ़ा तो सकते हो, इतना तो मैं बोल रहा हूँ। और आप पढ़ाई वाले लाइन में हो तो इट वोंट बी दैट मच टफ फॉर यू, लेट मी टेल यू दैट। तो मैं तो बोलूँगा आप नॉलेज गेन करो एआई मैराथन रिलेटेड, नया नया चीज़ सीखो, एंड एटलीस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आपका भी रिवीजन होते रहेगा, एंड नेक्स्ट ईयर जैसे कि आपने बोला आप जॉब के लिए सर्च करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह तो एनालिटिक्स में भी है ना भाई। एनालिटिक्स में उतना हम लोग यूज़ नहीं किए, लेट मी टेल यू दैट। मतलब मैंने अपने कंपनी में जितना काम किया उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेट मी टेल यू। वो बस हाँ, नो डाउट बोलते हैं कि पढ़ लो ये सब, बट इन माय ओन जितना भी मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया भाई, वेरी लेस यूज़, मतलब बहुत बहुत कम यूज़ हुआ है। लेट मी टेल यू दैट, स्टैटिस्टिक्स का नॉट इवन प्रोबेबिलिटी भी यूज़ नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग। मतलब हाँ, नो डाउट लोग बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, दैट्स नॉट द मिस्टेक, दैट्स अ गुड थिंग, होना ज़रूरी है नॉलेज। बट जब आप रियल इंडस्ट्रियल वर्क करोगे ना भाई, मैं तो बोलूँगा आप यू विल टेल कि यार इतना पढ़ा लेकिन यूज़ कहीं नहीं आया, काइंड ऑफ थिंकिंग आएगा आपके मन में, लेट मी टेल यू दैट। क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है भाई, लेट मी टेल यू, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मतलब मैंने तो यूज़ नहीं किया है भाई, आई डोंट थिंक उतना यूज़ होता होगा। आई विल जस्ट शेयर, मैंने पढ़ा हुआ है सो विल, इसमें भी इतना ही है जस्ट फॉर रिपोर्ट। ओके ओके, या प्लीज़ आप शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। Okay, like data science is just different mindset and 20 equation over analytics. Okay, okay, so it's like that। ठीक है, फिर करते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं डेटा इंजीनियरिंग का जो टॉपिक्स है जितने भी, उसको मैं अगर एक बार कवर अप कर दूं, उसके बाद फिर डेटा साइंस में ही जंप करूंगा मैं ऑब्वियसली। क्योंकि मेरा प्लान है प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च वगैरह करना, प्रोजेक्ट वगैरह शो करना। तो प्रोजेक्ट वगैरह जितने भी आएंगे तो उसमें ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह तो ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, हर चीज़ का कुछ एक हाइब्रिड वगैरह प्रोजेक्ट करके आई विल मेक श्योर आई विल डू समथिंग विद दैट। सो yeah, that's what suggestion I have for you, and thanks for your suggestion as well। मैं तो बोलूँ दिव्यम, एटलीस्ट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल वेर यू कैन टीच एंड शोकेस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा साइंस। मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा साइंस में ऐसे ही मार्केट बहुत, मतलब मैं तो देख रहा हूँ यूट्यूब में मार्केट उतना नहीं है डेटा साइंस का। तो आप एटलीस्ट अगर आओगे ना तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी कि समवन इज टीचिंग अस डेटा साइंस
से रिलेटेड सम कोर्स और सम प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग। तो मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट आप ट्राई करो कुछ एक प्रोजेक्ट वगैरह अपने यूट्यूब चैनल में। यू कैन पोस्ट दोज प्रोजेक्ट, लेट मी टेल यू दैट। सो इट विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि आप वैसे भी टीचिंग लाइन में हो, सो यू कैन। और बाकी मार्केट अभी पूरा ठंडा है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, आई मीन इंजीनियरिंग के लिए। तो आप अभी अगर करोगे तो पीपल विल बी हैप्पी कि चलो कुछ तो है। मैं खुद सीखूंगा उससे। मैं सीख के मैं भी कुछ अपने साइड से आई विल कंट्रीब्यूट, है कि नहीं? तो मैं तो बोलूँगा यू शुड ट्राई। या श्योर विल ट्राई, या श्योर भाई श्योर। मैं तो बोलूँगा भाई करो यार, पढ़ाना इज़ अ गुड थिंग। लेट मी टेल यू दैट। सो पढ़ाओ, नॉलेज बांटो, मैं तो बोलूँ।
वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम दिव्यम भैया, बताओ बाय द वे कुछ ट्रिक्स बताओ क्या विच वर्क फॉर मी। या श्योर श्योर, कुछ बताओ कुछ ट्रिक्स वगैरह। ट्रिक्स रिलेटेड टू व्हाट? यू कैन से दैट एज वेल, लाइक रिलेटेड टू व्हाट? लाइक यू नो ऑल प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स, ऑल तो नहीं बोलूँगा। फ्रीलांस, फ्रीलांस के लिए जितना मैं नेट में जानता हूँ उतना ही भाई। और ऑल प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स मेरे लिए तो अगर मैं बोलूँ, लिंक्डइन है और दैट्स व्हाट वी से नौकरी डॉट कॉम, शाइन डॉट कॉम भी शायद उतना आई डोंट नो अभी चल रहा है कि नहीं। नौकरी डॉट कॉम तो चल रहा है ज़्यादा। नौकरी डॉट कॉम और बाकी फ्रीलांसिंग के लिए तो अपना है उसका वही सब। ओके, यस यस राइट। नॉट सेइंग ऑल एज इन एवरीवन, हाँ राइट राइट, एवरीवन, आई अंडरस्टूड अंडरस्टूड। मतलब जितना ट्रेंडिंग में है, जितना लोगों को पता है, आई नो दैट मच। जस्ट चेंज द पोर्टफोलियो डेली, राइट। पोर्टफोलियो डेली से मेरे को एक चीज़ कनेक्ट हो रहा है, मालूम दिव्यम? एक चीज़ मैं देखा था पोस्ट इन लिंक्डइन, ठीक है, कि नौकरी डॉट कॉम में क्या था, लिंक्डइन में, यू नो सम पीपल हैव रोट कि नौकरी डॉट कॉम में अगर आप अपना डिटेल्स या तो आप अपना कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू डिटेल स्किल्स में थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हो, तो आपका प्रोफाइल टॉप में जाता है, बिकॉज यू आर अपडेटिंग। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन लिंक्डइन। और उस लिंक्डइन पोस्ट में बहुत सारे लाइक्स थे, कमेंट्स थे, कमेंट्स की लाइक या दिस वर्क फॉर मी काइंड ऑफ कमेंट्स थे उस रिलेटेड। जैसे कि आप बोले ना, जस्ट ओके वी हैव थ्री मोर मैसेजेस, लाइक फॉर नौकरी चेंज रेज्यूमे, लाइक सेम फाइल रीनेम। समझ गया, करेक्ट करेक्ट। आप भी वही सेम चीज बोलो, करेक्ट। मैंने ये लिंक्डइन में भी देखा था, एक बंदे ने बोला था, लाइक्स थे बहुत उसके, मतलब उस पोस्ट में लाइक्स भी थे, कमेंट्स भी थे कि यस दिस इज वर्किंग फॉर मी, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स थे, नेगेटिव नहीं। अगर आप कॉमा भी चेंज कर देते हो, मतलब कॉमा हटा के स्पेस दे के कॉमा किए होगे, तो इट विल वर्क आपका। जैसे बोलते हैं ना कि एल्गोरिदम आपका प्रोफाइल टॉप में रख देता है, जस्ट लाइक लिंक्डइन एंड ऑल। मतलब लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन बोल रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम वगैरह आप देख लो, यूट्यूब वगैरह आप देख लो, हर दिन आप पोस्ट करते रहोगे, आपको प्रोफाइल टॉप में जाएगा, आज नहीं तो कल। मतलब जाता है बट स्टिल प्रायोरिटी मिलता है। बट आई सॉ गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, सो डिड इट ओनली, इवन जस्ट रीनेमिंग फाइल। करेक्ट करेक्ट, इट इज ट्रू दिव्यम, दैट्स ट्रू। नौकरी डॉट कॉम में मैंने मतलब पढ़ा है, एंड यू हैव आल्सो टोल्ड द सेम थिंग, एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रॉम योर ओन साइड। सो या इट इज ट्रू, इट इज हैपनिंग। तो इवन तो आप कॉमा वगैरह भी चेंज करके देखो, एटलीस्ट आपको मेल्स वगैरह तो आएंगे कम से कम, कुछ ना कुछ आएगा कि आपका प्रोफाइल हमने देखा है, एटलीस्ट आप रिप्लाई करो, इस तरीके से कुछ ना कुछ आएगा। सो या दैट्स द थिंग। आई हैव सीन आई हैव सीन अ पोस्ट इन दिस 2 years बैक, जब मैं अमेजन में था, तब मैंने अप्लाई किया था, तो इस तरीके से। तो मेरे को, यू नो लाइक आई हैव नॉट टोल्ड दिस टू एनीवन, लाइक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस इन माय लाइव स्ट्रीम, कि in this way I have got interview from Well Fargo's, Target and Walmart। इन तीनों जगह इंटरव्यू भी मिला, but the thing is they are not even close to the salary that I was getting in Amazon, so I have to reject that। तो इन दिस वे मेरे को अच्छे अच्छे मतलब बैंगलोर का ही कंपनी इसमें, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाना पड़ेगा, बैंगलोर में ही मेरे को टारगेट, वेल फार्गोस एंड वॉलमार्ट, तीनों से कॉल आया था, दैट टू फ्रॉम नौकरी डॉट कॉम, तीनों नौकरी डॉट कॉम से। दैट वाज थिंग फॉर फ्रीलांस साइट्स, साइक्लिंग स्टफ पोर्टफोलियो। ओके, ये मैं चेक करूंगा फिर फ्रीलांस साइट्स में। और चेंज लोकेशन एज वेल। ओके, मतलब मिनिमम अपडेट यू विल डू इट।
मतलब मिनिमम अपडेट में ही आपका लाइक आईआरएल लोकेशन, लाइक मिनिमम अपडेट में ही आपका प्रोफाइल में ये हो जाएगा कुछ ना कुछ, you will get to gets update like that. मेरा पुणे में डेली जॉब्स आता था, अभी लोकेशन गुजरात में है ना, तो वो प्रोफाइल लुक्स खोस्ट, यस राइट राइट। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब में भी बोलता हूँ, जैसे कि जो जो फ्रेशर्स आते हैं, आप भी होंगे सुने होंगे, मैं जैसे बोलता हूँ कि यू विल गेट अ जॉब इन स्टार्टअप कंपनीज बट इन मेट्रो सिटीज लाइक बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, इस तरीके से। अगर आप अपने आसपास के लोकेशन में विच इज़ नॉट मेट्रो, सपोज इट इफ इट इज़ नॉट मेट्रो, इफ यू आर गिविंग दैट लोकेशन, तो नहीं मिलेगा आपको। भले ही आप छत्तीसगढ़ में रहो, यू हैव टू गिव योर लोकेशन एज बैंगलोर। बैंगलोर में कोई भी पीजी वीजी का लोकेशन उठाओ, दे दो, सिंपल। मैं तो ये बोल रहा हूँ, एंड इट हैज वर्क फॉर मोस्ट ऑफ माई कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल। मतलब कॉलेज स्टूडेंट मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स, दिव्यम, लेट मी टेल यू दैट। सबसे बेस्ट मेरे फ्रेंड्स लोग क्या किए थे, जो लोग उड़ीसा में काम कर रहे थे, दे यू नो व्हाट दे डिड, डायरेक्ट वो लोग पीजी खोजे, ठीक है। पीजी खोजने के बाद पीजी का एड्रेस दे दिया, कोई भी XYZ रूम नंबर दे दिया, पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, खत्म। और सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब सीवी, रेज्यूमे, लिंक्डइन, हर जगह उन्होंने चेंज किया, एंड इट हैड वर्क फॉर देम। मेरे दोस्त पुणे में है और बैंगलोर में भी है, प्लस गुड़गांव में भी है। दैट्स मैटर द मोस्ट। और मेरा भी गुजरात है, एंड ओपन प्रोफाइल फॉर अ वीक, गॉट 4 responses, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, रिक्रूटर भी देखता है कि ये बंदा, चलो कि मतलब क्या है भाई, आ, जैसे रिक्रूटर चेक करता है ना, देखना, आप जब इंटरव्यू दोगे, रिक्रूटर एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, जिसने भी इंटरव्यू दिया है, दे आस्क वन क्वेश्चन एट द एंड कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ठीक है। तो रिक्रूटर ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है, जो बैंगलोर में ऑलरेडी सेट है, ताकि पूछना ना पड़े कि भाई तुम रिलोकेट हो सकते हो कि नहीं। तो इसलिए उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है, और रिस्पॉन्स भी मिलता है, लाइक यू हैव टोल्ड राइट नाउ, गॉट 4 responses। पहले इट वाज फ्लडेड, ऑब्वियसली यार, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव, मिल जाएगा। ऊपर से वो लोग दे डोंट इवन सी कि भाई आपका गैप है रेज्यूमे में कि क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे आ जाओ, दैट्स द थिंग। So yeah, that's good thing, and that's a good experiment that you have did, and that's a good one, मैं तो बोलूँ। So yes, I would say it works for everyone, and you are the one who have done tried and tested. That's a good thing. So I think everyone should try it, and everyone should move out of comfort zone. Sorry कि ये मैं बोल रहा हूँ, because क्योंकि people will be questioning कि आप तो बैंगलोर से छोड़ के अपने लोकेशन पे आ गए, सो दैट इज़ अ थिंग। सो आई वोंट से दिस कि कंफर्ट जोन से हट के काम करो, कंफर्ट लोकेशन से हट के काम करो, बिकॉज इफ यू सी मी, आई हैव लेफ्ट बैंगलोर एंड चूज freelance work, that is work from home, so I am not the right person to say that, but anyways, मैं तो बोलूँगा कि भाई अपना स्टार्टिंग फेज एटलीस्ट मूव टू बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, मेट्रो सिटीज, ठीक है, एंड गो फॉर इट। मैं तो बोलूँ स्टार्टिंग फेज में एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप देख लो कि दुनिया कैसा चलता है, दुनियादारी सीख लोगे आप लोग, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या सही रहेगा, क्या गलत। दिस इज आफ्टर टेस्टिंग फॉर अ मंथ इफ नॉट मोर, ओके। मेरा भी वही है यार, इट्स नॉट रॉन्ग टू डू, एवरीवन हैज देयर प्रायोरिटीज, राइट राइट। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टार्टिंग में मेरा कुछ प्रायोरिटीज नहीं था, व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय करियर, उस टाइम जहाँ जो नौकरी मिले चले जाओ, ठीक है। बट अभी एज मैटर भी है, और भाई अब हो गया है कितना ये सब। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग नए हैं, मैं तो बोलूँगा कि भाई यू शुड मूव टू सम मेट्रो सिटीज एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब। मतलब नॉट डोंट मूव फर्स्ट, घर में बैठ के सर्च करो, मिलेगा एंड गो, ठीक है।
भले ही पीजी रेंट ज़्यादा हो, भले ही खाना महंगा हो, भले ही लोकेशन महंगा हो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो। दैट्स व्हाट सजेशन आई हैव फॉर एवरीवन। So that's a good thing, Divyam. Thanks for sharing as well. रेडिट लिंक्डइन में ये पोस्ट भरे हुए हैं। हाँ, मैंने तो लिंक्डइन में देखा, लाइक आई हैव टोल्ड यू। मेरे को तो लिंक्डइन में ये पता चला कि लोग तो बोल रहे हैं कॉमा फुल स्टॉप चेंज करने से भी, मतलब ऐसा ऐसा कमेंट देखा हूँ कि लोग डेटा एनालिस्ट में ना डी जो है, डेटा का डी वो स्मॉल करने से भी उनको भाई आ रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि इतने रिक्रूटर्स ने आपका प्रोफाइल देखा, इतने रिक्रूटर्स ने आपका प्रोफाइल में एंटर किया, इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, इस तरीके से है पोस्ट। आई हैव सीन एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि चलो, मतलब छोटा मोटा चीज भी कैन ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड रेडिट में तो भाई, रेडिट में तो पूरा ओपन सोर्स है। हाँ, मैं इनकी बात कर रहा था। हुम, वो मैंने कभी नहीं देखा था। ओके, मतलब हाँ भाई, भरे रहते हैं, मतलब आई नॉट भरे रहते हैं, बट जितने भी पोस्ट है मैं तो बोलूँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग। हाँ वेट, मेरा कमेंट स्किप है, वो दिखा नहीं रहा है। एनी लिंक वगैरह है तो शायद स्किप कर देता है। लिंक वगैरह है तो आप चाहे तो मेल कर सकते हो। नहीं आ रहा है तो बेटर मैं तो बोलूँ, कुछ अगर है तो आप मेल कर दो, बेटर रहेगा।
हेलो हेलो या भैया, वैसे H1B वीज़ा का देखा, हाँ 90 lakhs का कुछ ये लोग दिया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कुछ भरने वरने का। चाइना के लिए 12% बढ़ाया है, इंडिया के लिए समथिंग 72% कुछ बढ़ाया है उन लोग एप्लीकेशन फीस या कुछ, विच कम्स अराउंड 80-90 lakhs, मतलब अ, पता नहीं भाई, नो कमेंट्स। हम लोग भी यूट्यूब में ही है, कल को कुछ हो जाएगा सपोज तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता भाई। कल को कुछ बोल दिया कि यार क्लासेस विथ मी नहीं चलेगा यूट्यूब में, चलाना है तो 1 करोड़ दो, तो फिर रिस्की है, तो नो कमेंट्स फॉर दैट। 100K डॉलर्स, हाँ वही 80-90 lakhs है ना कुछ समथिंग। 100K डॉलर्स, वाह। है भाई, करो मतलब। नहीं, मैं मुझे लग रहा है हटाएगा यार इतना, अगर भाई वहाँ यूएस में ज्यादातर इंडियंस और चाइनीज ही है जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली यूएस को चला रहे हैं, मान के चलो। टेक्निकल फील्ड में तो भाई वही लोग हैं। तो मैं तो लगता नहीं है कि ये सब, और इंडियंस भाई भरे हुए हैं, इंडियंस और चाइनीज ही हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं यूएस में जाके। एंड इवन दो, अगर उन्हीं को ही निकाल देगा तो भाई कैसे। भाई देखो, एक तो मैं तो बोल रहा हूँ, एप्पल को जैसे बोला था इंडिया से हटा दो, इंडिया में सामान नहीं बनेगा, एप्पल मना किया ना, तो ऐसे भी दो चीज हो सकता है भाई। मैं तो बोलूँ, जो वीजा दे रहा है जो कंपनीज, इधर दे हैव टू पे दैट, देयर इज नो ऑप्शन, दे हैव टू पे दैट, बट ऐसा हो सकता है तो प्रेशर डालेगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ, प्रेशर डालेगा लोग डोनाल्ड ट्रंप पे कि भाई ऐसा करोगे तो कंपनी भी चलाना पड़ेगा, बाद में टैक्स भी देना है ना, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो टैरिफ वाला क्या चल रहा है, कभी लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, कभी कुछ काइंड ऑफ थिंग ना। यार इस पे थोड़ी कुछ होगा, लाइक इतने एनालिसिस वीडियो वगैरह आ रहे हैं। मैंने चेक नहीं किया, मैं बस न्यूज़ देखा हूँ, दैट्स इट। मैंने उतना आ- आजकल मैं सही बता रहा हूँ दिव्यम, सोशल मीडिया ये न्यूज़ वगैरह सबसे मैं हट चुका हूँ, मतलब इतना नेगेटिविटी है भाई, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, सीरियसली, मतलब आई एम फेड अप विद दिस नेगेटिविटी, जिसके कारण मैं न्यूज़ व्यूज़ तो छोड़ा भी हूँ सब कुछ भाई, सही बता रहा हूँ। एप्पल का गोल्डन बार पता है ना, एप्पल को गोल्डन बार से क्लियर किया। व्हाट इज गोल्डन बार, पता नहीं मेरे को, दैट आई डोंट हैव आइडिया रिलेटेड टू दैट, कि गोल्डन बार क्या है, आई हैव नो आइडिया फॉर इट। इतना मुझे पता है, एप्पल का उन्होंने मना किया था कि आप इंडिया से अपने फैक्ट्री को हटाओ एंड और कहीं लगाने के लिए, बट उन्होंने मना किया बिकॉज इंडिया में एक तो इतने चीप रेट्स में बन रहे हैं आईफोन्स, तो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वाई दे विल मेक सम नेगेटिव इम्पैक्ट और मेक सम नेगेटिव मूव जिसमें कि उनका कंपनी हैम्पर हो, क्योंकि एट द एंड देखो, एप्पल को तो ट्रम्प को ही पैसा देना पड़ेगा ना भाई, टैक्स वैक्स के लिए, तो दे कांट डू इट। अब बाकी अब ये गोल्डन बार क्या है, नो आइडिया। न्यूज़ सर्च करो एप्पल गोल्डन बार, ओके लेट्स सी। एप्पल गोल्डन बार, वो सॉरी टू से भाई, मैं एप्पल गोल्डन बार टाइप किया और मुझे यहाँ क्या दिखा पता है, एप्पल गोल्डन बार 500 TMT बार्स, इंडिया मार्ट डॉट कॉम। आई एम वेरी सॉरी फॉर टैरिफ भी लिखना था मेरे को, TMT सरिया दिखा दिया। मेड इन यूएसए 24 कैरेट गोल्ड गिफ्ट फॉर ट्रम्प, अ टैरिफ रिलीफ फॉर एप्पल। ओ बाबा, 7 अगस्त का न्यूज़ है। ओ अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया था, बट व्हाट, व्हाई दे हैव गिवन देम दिस,
आई हैव नो आइडिया। अच्छा, अब मुझे मालूम चला, ये टैरिफ के कारण है क्या? अ टैरिफ रिलीफ फॉर ओनली एप्पल, फॉर एप्पल। ओके। Custom engrave for Trump and it is sitting on a golden holder. हम्म। दिव्या, मेरा कॉलेज फ्रेंड ने बताया था, ही वर्कड इन फॉक्सकॉन। हे हाय प्रोपेल, प्लीज वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Isn't it expensive to make iPhones in India? See, I don't have any idea about it. Apple might be getting a huge kind of, I mean, manufacturing expenses relief by making in it India, because they are making in bulk. And as far as I can see, bro, in this sale, like on 22nd, there will be sale. And if Flipkart is selling their iPhone 16 Pro at 69, 79,000, that means just think how much, like at what cost Apple might be making, because at least 10 12,000 mein to pro model they might be making, I can say. Because if Flipkart is selling at 16 and 70,000, that means Flipkart is also not at loss, they are selling at profit. Suppose Flipkart might have bought this iPhone for 30K from Apple, suppose in bulk order. So Apple might be making it in maybe 10K, maybe less than that. No, no idea for it. For relief in tariff नहीं तो this time iPhone वगैरह gonna cost 2K dollars instead of one. हाँ, 1099 तक शायद गया है हाईएस्ट, इतना मुझे पता है। एटलीस्ट एम्प्लॉय में ये बताया। हाँ, फॉक्सकॉन राइट। Isn't it expensive but cheaper than other countries except China? But China have unstable market since Jack Ma case. Yeah, right, right. If you say something about the government, you are done. China's market. एप्पल मेक हार्डवेयर फॉर 10-15K, मे बी लेस देन दैट। अब तो इंडिया में बना रहा, अब तो और भी कम में होगा मेरे को तो लगता है। ओके, वी हैव सॉरी मिस द मैसेज फ्रॉम प्रोपेल, दैट मीन्स about $800. Why would be so inexpensive in Flipkart? No idea, bro. See, they are selling it. If you go and check right now, they have closed that part. मतलब जो 69,999 का था ना, 16 Pro model, they have closed that point. Now they are selling the 16 Pro वाला model at 80K. मतलब just think, launch price was around 1.2 lakhs, ठीक है, launch price. And right now they are selling it almost half, 80K के आसपास. Just think at what price Flipkart might have bought it. Because see, Flipkart won't be selling that phone at loss. Let me be very frank with you. Everyone, like, that is basic business. No one will sell their product at loss. And Flipkart in such a big company, that to Walmart back, they won't sell it at loss. Just think at what price they might have bought from Apple. Means maybe max to max 10-12K per phones. That to pro model. Pro model I'm saying. 10 to 12K might be, because they would be selling at more than 100% ka price mark. Let me tell you why. Because they will be selling this 16 Pro ka model at 2026 as well, 2027 maybe. At that time they will give more discount. Right now if they are selling in 80K, just 1 year old, 80K, 2026 they might be selling at 50K. 2027 if stocks left, they might be selling at 45 max. So if Flipkart is selling at 45K, suppose, then just think at what price they might have bought these phones. That too in bulk order. And what price, means I would say iPhone had
manufacture this phone in India. Matlab, literally, I'm saying huge margin, huge. And Apple is a, I mean, huge company, huge profit margin. Just see how much price they're saying. Just that's the thing. Apple make the hardware for 10-15K. उनका per phone cost is 80%. Research cost, okay, हाँ research मतलब software. Propel based no way 12K if they bought in bulk. Nobody knows. I am just saying example. I don't have idea like what price they might have bought. But let me tell you one thing. When I was working in Flipkart, means I have seen the bill, inward का bill, मतलब inbound में the fridge, Samsung fridge which are around 50K, 60K, their on paper bill per head was around something 5-6K. Just imagine at that time. That is for fridge I'm saying. Because see, Flipkart also directly order from companies like Samsung, malab direct from the factories. They don't have any middlemen. They directly buy from the factories, store it in their warehouse, and then they sell it as per location basis. So on paper bill was this much less. So just think, malab around max to max 10K in Flipkart. What I can say, malab it is so less. Just fridge I'm saying. Just for fridge, because it is full bulk order. Now bulk order matlab Flipkart buys full for all the warehouses in India, so they buy around more than, in our warehouse only, in our Flipkart warehouse it was around more than 1 lakh of fridges, different models, not only single model, different models, and they are sold out like anything, like very fast, very fast sold out, because during this sale season and during this summer season, especially fridge and ACs, you will be seeing inward and outbound like hell. So like this kind of situation I have seen in Flipkart. I don't know about phones, but let me tell you, it will be very less, bro, very less. You just no need to see anything, just see the price of 14 Pro, because from 15 they've started making iPhones in India. Okay, just check the price of 14 Pro and check the price of 15 Pro. There will be a huge difference. There will be a huge difference, let me tell you that. So if there is a huge difference in MRP, just think at what price they would have made, because they won't sell the phone at loss, let me tell you that. So whatever they make, it is all about software, like Divyam have told, related to software. Their camera is from Sony, their screen is from Samsung, their XYZ is from XYZ companies, but their software, it is all about whatever they make. So it is all about that. So, and let me tell you one more thing. This, if you see S24 Ultra in today's price, 24 Ultra, 25 is right now they have launched. 24 Ultra has been selling at 79K right now. In sale, it will go much more less than anything. So obviously, see, these companies are making huge profit. Let me tell you, huge profit, bro. Like Samsung, Apple, OnePlus. Let me. OnePlus are selling this kind of, I mean to say, huge hardware and software upgraded phones at 50K. Then obviously there are chances this Samsung and Apple are charging much due to their brand values. That is all thing. Like if OnePlus sell their OnePlus 13 cup phone at 1 lakh with the same kind of features that we have in S25 Ultra, if you remove that pen, that's it. So nobody will buy, because everybody will say ki yaar Samsung big brand, why not to pay 1 lakh to Samsung rather than paying 1 lakh to OnePlus. So OnePlus, due to brand value, they might be selling at this point. But even though if you see the fold phones in Samsung, it is huge price, like more than 1 lakh, but still less than Samsung. You might have seen that. So that is the thing.
everything is on brand value, and everything is on, yeah, brand value only. That's it. Everything is on brand value, I would say. Samsung and Apple, full brand value, bro. मतलब OnePlus, Vivo, they make better phones, better camera than this Samsung and Apple, let me tell you. Better, and most of the people in India use phones for maximum 5 years, max to max. And OnePlus and Samsung, they make their phones in such a way that it will run for 5 years only. And anyhow, people will change their phone after 5 years. So that's the thing. What I have seen in today's market. So this is what I can see. Check report from Money Control. They explain it really well. Yeah, Money Control, finance wala part. That's a good thing. I used to see Money Control when I used to invest money in, I mean, invest some capital in mutual fund. That's the good thing. Money Control is good one, I would say. But let me tell you one thing, bro. This, you might have seen news in this मुंबई वाला जो ये है ना क्या शोरूम, पीपल आर फाइटिंग फॉर बाइंग आईफोन. मतलब ब्रो, पीपल आर फाइटिंग, मतलब जस्ट कैन यू इमेजिन. वाह वाह. ओह माय गॉड. मतलब रियली आई हैव सीन द वीडियो एंड आई वाज शॉक्ड. मतलब लाइक डोनाल्ड ट्रम्प हैज टोल्ड dead economy kind of thing. I can't see anything dead economy. Like there might be dead. It's not a good thing to say, but people are buying iPhone like standing in line. They are fighting. Second thing, people are buying Coldplay tickets like this expensive. Like let me tell you, I don't have that much guts to buy that much expensive. But that's what, like, India is not dead economy. I would say people have money. Let me tell you that. I don't know at what sense Donald Trump has told dead economy and all. Seriously. Matlab, the video is really, matlab, I would say, it's it was shocking when I've seen people were fighting. So, bhaiya, but most people, yeah, that's obviously, that is also news. 80% तो EMI से ही है. 80-90%. That's on EMI, that I know. But still, people have guts to buy this much. Uh, matlab, if you say them कि भाई invest this much, but anyways, let not comment anything on it, on this. Let me tell you that let's not comment anything on it, because see, that's people money. I am not the right guy to comment anything. No one should comment. So let them buy, their money, their decision. No comments. But yeah, but okay, if you remove top 5% of your country, then we are almost same income as Somalia. That's why our country is flamed in other places. Okay, top 5%. Right. This much population we have, top 5% will be huge. So yes, at least people who are earning 50K per month, na, they would be really buying this iPhones, I would say. 50K per month, I would say. So that's the thing. What I can see from today's market, if people are earning 50K in hand, I'm saying in hand, then yeah, people are buying iPhones for more than 1 lakh. So that's the thing. And also one more thing, if see, just like if you see me, I am not married, I don't have to take care of my wife or my kids because I am not married. So in that situation also people can buy iPhone, because that's the thing. मतलब कि आपको दूसरों के लिए कुछ देखना नहीं है, आपको अपने ही संभालना है, अपने ही देखभाल करना है. तो अगर अपने लिए आप खर्चा नहीं कर पा, मतलब कर पा रहे हो, तो दैट्स, आई वुड से, इट्स अ गुड थिंग. Only top 3% or something earn that
3 to 5%, not sure. Yeah, भाई 3 to 5 कितना ही डिफरेंस है यार. बट एनीवेज मैं एक सजेशन दूंगा एवरीवन दोज हु वांट टू बाय आईफोन, always buy iPhone on this sale period, and always listen to one thing. Let me tell you, I'm saying this to everyone. Anything, any electronic device, either it's phone, either it's laptop, always buy on the first 5 minutes of the sale, on 22nd 12 o'clock to 12:05. In that time, if you buy the phones or laptop, that will be the lowest price you will ever see in sale. And believe me, trust me, this is what happens in Flipkart and Amazon. Please, you can also do that experiment. ठीक है ना? So always, if you want to buy anything, even if it's iPhone 16 Pro, 15 Pro, nobody cares. Let me tell you, if you are having a Pro model, people care कि भाई ये तो बड़ा आदमी है. If you have 12 Pro also, people will think बड़ा आदमी है. So Pro model, anything anybody want to buy ना, तो सेल के टाइम खरीदो. अभी जो 22nd को सेल आएगा, तो बेटर टू बाय phones or electronics at that time, at the first 5 minutes. मतलब 12 o'clock the sale will start, till 12:05 whatever you want to buy, you buy it. That's it. Because after that, crowd also will increase. Similarly, price will also get increased. ठीक है? So take care of that. भैया want an even better option. I feel like saving is better. I am money minded person, so yes. भैया want an even better option. Like what you want, like if I can help you in this. Go for one generation below unless it's revamped, as you can have 30% saving at max, 20% life loss. Like phones, go for 6 year premium and laptop for 8. That's good. That's good. That's a good thing. मैं तो बोलूँ इवन दो अभी जैसे 17 है ना, इफ यू आर स्टिल बाइंग 13 Pro, 14 Pro, that's a good thing. मतलब more than enough. Let me tell you. If you go one gen below, you lose 1% performance but save 30%. So on average, at least one generation से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Let me tell you. Like at least आज के डेट में सारे कंपनीज दे प्रोवाइड ऐसा हार्डवेयर और ऐसा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर 5 इयर्स का तो अपडेट्स वो लोग देता है हर फोन में आज के डेट में. एटलीस्ट हार्डवेयर वो लोग ऐसा सेट करता है कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप आराम से चला लोगे. ठीक है? तो 1 साल पुराना लेने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी टेल यू. तो या दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से दिव्यम. दैट्स अ गुड थिंग. नहीं, डोंट गो बिलो 15. इट्स सो बैड. बिलो 15 का मैं तो बोल रहा हूँ भाई, 14 प्रो में इश्यूज तो आ रहा है. आई हैव फेस्ड इट एंड आई डोंट नो व्हाई यूएस कनाडा वर्जन में ही इश्यूज आ रहा है. व्हाट आई हैव सीन, बेटर टू बाय 15 एंड 15 के ऊपर, बट डोंट बाय प्रो मॉडल्स. उसका स्क्रीन में बहुत इश्यूज आ रहा है. लाइक मैं तो बोलूँ इन आईफोन्स जितने प्रो मॉडल्स है फ्रॉम 14 टिल 16 प्रो, screens are having lots and lots of issues, so it's better to buy normal wala 14, 15, 16, 17, not pro. Because I don't know why screen issues are there. I have seen in Reddit lots and lots of screen issues are there in pro model. And
from my own experience I'm saying, like updates are aimed to kill device. हाँ, Apple का तो भाई update you do, your battery level will go down like anything. Even if you don't use your phone much, you update it, automatically it will. That's everybody knows. Like that's a very bad trick for Apple. I've seen that. I got my mom a phone and it's already dying like Antutu score was dropped by 40%. It will, yeah, it will. I have seen. Most of the people complain this thing, even though Apple had been fined for that. But I stop updates on my phone and it's 4-year-old still working ekdam smooth. That's a good thing. Until and unless the phone is not asking for update, मतलब phone is not asking for, I would say, pressurized update कि भाई update करो करके. That time, till that time don't do. मैं तो बोलूँ तब तक रखो जब तक सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं, और एप्लीकेशंस भी एक टाइम के बाद दे आस्क फॉर अपडेट, सो डू एट दैट टाइम, ठीक है. नॉट ओनली एप्पल, इट्स ट्रू फॉर ऑल. माय फोन इज Xiaomi एंड मम्स इज Vivo. ओके, Xiaomi Vivo में भी मतलब एंड्रॉयड में भी दे आर डूइंग दिस थिंग. दिस आई डोंट न्यू. इन दिस केस नथिंग इज बेस्ट. ओके, ऐसे बोलूँ तो भाई मैं तो बोलूँ इट इज़ बेटर टू बाय this Xiaomi, Vivo, OnePlus kind of phones. At least it is in this case nothing. अच्छा, nothing company के बारे में बोल रहा हूँ मैं. I have never tried nothing. I don't know how is it, but it's look good. When you get notification, it's look good. Like I suggested it to my friend. उसका Antutu on buying 60-80K था. अभी 68. ओ अच्छा, 600K. 600. ओके. तो नथिंग का लाइक हाउ इज इट गुड, मतलब बिल्ड क्वालिटी कैसा है नथिंग का, इफ एनीबडी कैन सजेस्ट. नथिंग का बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छा है तो या दैट्स गुड थिंग, बिकॉज नथिंग अच्छा चल भी रहा है मैं तो बोलूँ. अब अभी तक तो वो जैसे कंप्लेन आया नहीं है, और कंप्लेन आता है आई थिंक दे विल करेक्ट इट.
सो उसका फॉल नहीं आता, genuinely good. New वाला not so good, but it's pretty great to use. They get complaints, but they fix it too. Like नया nothing phone started at 80K. People don't buy now, but it's 38 on sale. बाबा 38,000 मतलब 80K का फोन. Wow. Right now, most of the people will surely buy it. Let me tell you this. That's a good thing. मतलब इतना कम में मिल रहा है. That's a really a good thing मैं तो बोलूँ. ना people don't buy nothing because of brand image. Brand image तो ठीक ही है. मतलब हाँ, phones थोड़े फैंसी है and people like reviewers they say कि यार खिलौना टाइप का फोन है, वो एक इमेज बन गया है. जैसे that's obviously we should not do like that. मतलब फोन्स जो है मैंने जितना देखा यूट्यूब में रिव्यूअर्स बोलते हैं इट्स खिलौना फोन है, क्यों लोगे, एंड ऑल दैट स्टफ्स दे टेल, विच इज़ नॉट गुड यार. ऐसा बोलना नहीं चाहिए. बिकॉज फोन देखो, एट द एंड आप फोन पे कवर लगा के ही घूमोगे कितना भी आप रहो, ठीक है ना. तो आप कितना भी वो कवर लगा के घूमोगे वो तो दिखेगा नहीं, लाइट्स वगैरह. सो आई डोंट नो व्हाई रिव्यूअर्स टेलिंग लाइक दिस. मे बी not paid or something kind of thing, but still. Like there are communities calling it as वन प्लस कॉपी, नहीं तो इट्स genuinely good. वन प्लस इज गुड फोन. मतलब वन प्लस कॉपी भी अगर कर रहे हैं वन नथिंग तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग ना. प्रॉब्लम क्या है. मैनी इन रियल लाइफ से डिफरेंटली. ओके, आई वुड से वन प्लस हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग. मतलब वन प्लस का ग्रोथ इज गुड. और वन प्लस के ही कुछ एम्प्लॉयज ही हैं जो नथिंग फोन बना रहे हैं, सो दे नो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो ऑब्वियसली, बट नो नीड टू वरी. धीरे धीरे देखना दिव्यम, पीपल विल गेट मोर inclined into वन प्लस एंड नथिंग, Xiaomi, Vivo, everything in near future. Let me tell you that, because आने वाले टाइम में इतना फोन का वैल्यू, मतलब प्राइस वैल्यू बढ़ा देंगे विदाउट giving that much things that people will be bound to buy this OnePlus and all. Let me tell you that. And these are really good phones. Let me be very frank with you. हाँ, apart from Samsung, why I'm saying good phone, because Samsung का कॉल रिकॉर्डिंग ठीक है. कॉल रिकॉर्डिंग in Samsung they won't say anything कि your call has been recorded because of Samsung dialer. So that is what best for me I have seen. They say it's छपरी वन प्लस, like छपरी version on वन प्लस, नहीं तो everyone have bought it, यार लविंग इट. या ऑब्वियसली यार, देखो वही दैट ओनली आई टोल्ड. आप कितना भी बोलते हैं ना कि खिलौना फोन है, ये है वो है, भाई खिलौना फोन बैकग्राउंड में दिखेगा ना आपको, बैक में. और आप फोन को तो आप 30-40 हज़ार का फोन, 80 हज़ार का फोन ले रहे हो, तो उसमें तो आप कवर लगाओगे ही. तो कवर में थोड़ी मालूम चलेगा कुछ. ठीक है, बोलना क्या है उसमें. नहीं भैया, फोन मार्केट इटसेल्फ विल डाई इन डिकेड और सो. मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फोन बंद हो भाई. मतलब सीरियसली, लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स. मैं तो बोल रहा हूँ पहले वाला जमाना सही था, व्हेन दिस फोन यूज्ड टू कम. लाइक इफ यू सी राइट नाउ, आई यूज दिस कीपैड का फोन बिकॉज देयर आर सो मच डिस्ट्रैक्शन.
in my life, let me tell you, so much distraction, so much Instagram and all. I bought this phone, and during my work I use this phone only. That's the thing, and really it has saved a lot of time, this keypad phone. Let me be very frank with you. If you are practicing anything, if you are studying, if you are doing something, then please, I would say buy this phone. Really, you will feel like आप जेल में थे, आप जेल से बाहर निकल गए हो, इतना आपको सुकून मिलेगा वंस यू लीव इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल थिंग, and only deal with this kind of phones. You will really feel very happy. I have felt it. That's what I'm saying. वैसे other phone devices also have, you can change dialogue to prevent that dialogue. I have tried, I've seen most of the people did that in Vivo में हो जाता है, Vivo में डायलर आप चेंज करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हैड वीवो, तो उनका काम कर रहा था और अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। बाकी फोन्स का मैंने उतना देखा नहीं है, गूगल का तो छोड़ दो, पिक्सल का तो उनका तो स्टॉक एंड्रॉयड है, वो तो भाई उनका है ही जो भी। ग्लोबल मार्केट ऑफ फोन फेल बाय 17% इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 पावर। गिरेगा भाई, जितना लोग महंगा कर रहे हैं ना फोन को, और फीचर्स भी दे रहा है एकदम जैसे पता नहीं क्या, मतलब। और मैं तो बोल रहा हूँ राइट नाउ ब्लैकबेरी शुड कम बैक इन द मार्केट। ब्लैकबेरी जिस दिन आ गया ना, तो इट विल बी गुड, जिसमें कि ना मेल चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है, लिटरली इट विल बी अ गुड, मतलब मैं बोलूँ अच्छा समय रहेगा अगर ब्लैकबेरी अभी आता है तो। यू कैन चेंज डायलर एवरीवेयर एक्सेप्ट एप्पल। एप्पल का तो भाई नो कमेंट्स भाई, नो कमेंट्स। सब पता नहीं, जेल ब्रेक वगैरह करके कर सकते हो। आई हैड डन दैट इन माई कॉलेज टाइम, जेल ब्रेक वगैरह करके यू कैन डू दैट। और जेल ब्रेक करने के बाद मैंने ब्लूटूथ भी यूज किया है, दैट वाज अ गुड टाइम। अभी का पता नहीं जेल ब्रेक का क्या सिनेरियो है, बट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज राइट नाउ इन यूएस, जो यूएस फ्रेंड है, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग, जेल ब्रेक, आपका जो बोलते हैं ना इसको, एंड्रॉयड का एक क्या बोलते हैं, नाम भूल गया है, नाम भूल गया यार। Just like jailbreak, Android have some kind of keyword for that jailbreak. Mm, I forgot the name. He had OnePlus, पहले वाला OnePlus जिसमें कि बैक, OnePlus के बैक में वो स्क्रब टाइप का था। That OnePlus he used to had, and he used to do a lot of rubbish things. He will just switch off the projector का, all that thing he used to do, projector बंद कर देगा and all that thing he used to do a lot, and he is a good friend, उसका नाम भी शुभम ही है, and he is my senior also, मतलब in college, मतलब स्कूल सीनियर भी था, but he took drop and सब दोनों सेम ही कॉलेज में आ गए, सेक्शन अलग था but still, तो he was very much into technical things, तो ये सब वो करता था बहुत कुछ। तो मेरा भी फोन जेल ब्रेक उसी ने किया है, आईफोन का, and thanks to him. You can change dialer everywhere except Xiaomi is best है in case they copy good features and provide it far cheaper. भाई Chinese phone are really best. Let me tell you that OnePlus, Xiaomi, Vivo, भाई their price range, their features, A class. Let me tell you that. Custom ROM flash करना kind of thing, कुछ kind of, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक प्रॉपर नाम था, मतलब लेट मी फाइंड, मैं क्यूरियस हो गया, मेरे को खोजना ही पड़ेगा वो, आई एम वेरी क्यूरियस ऑन दिस। लेट मी फाइंड दैट। रूट, हाँ, रूटिंग, यूजुअली कॉल्ड रूटिंग, रूट करना, राइट। हाँ, बोलते हैं कि एंड्रॉयड को रूट किया कि नहीं, दैट्स ऑल द थिंग्स। उसमें हम लोग जो आप बोले ना कस्टम रोम,
मतलब इतना बढ़ा दे रहा था वो कि फोन गर्म हो जा रहा था, और हम लोग बोलते हैं देख कितना स्पीड हो गया इसमें। एंड वी यूज टू, मतलब दैट वाज अ टाइम जब बोलते हैं कि रूट किया कि नहीं, फोन रूट कर दे एंड ऑल। तो रूट करते थे एंड ऑल द थिंग्स वी यूज टू डाउनलोड, मतलब जो क्रैक फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना एंड ऑल, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी यूज टू डू इन कॉलेज टाइम। एंड अभी तो कुछ मन भी नहीं करता सब कुछ करने का। मतलब टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। अभी इट्स नॉट वर्थ इट आफ्टर एंड्रॉइड 12 इट्स किल्ड। ओके ओके, ये मालूम नहीं था मेरे को, लेकिन हाँ अभी तो वर्थ इट भी नहीं। अभी क्या क्या मतलब क्या ही करोगे यार ये सब। उस टाइम का था, मतलब उस टाइम हम लोग तो रात रात भर जग के खोजते थे कि क्या है क्या नहीं है। मेरा जो फ्रेंड था वो तो मतलब बहुत कुछ खोजता था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। ही यूज्ड टू फ्लेक्स अ लॉट मतलब इन टेक्निकल थिंग एंड इन अ पॉजिटिव वे। ही यूज्ड टू फ्लेक्स अ लॉट कि देख मैं कैसे लैपटॉप्स को ऑन कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल, और ही यूज्ड टू डू इट, मतलब अपने वन प्लस मोबाइल से वो लैपटॉप ऑन करता था एंड ऑल दैट स्टफ्स ही यूज्ड टू डू। अपने लैपटॉप से मोबाइल को ऑफ करता था, लॉट्स ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू डू। इफ यू रूट बाय मिस्टेक मोस्ट ऐप विल कॉज इश्यूज, सो कस्टम रोम डालना पड़ेगा या। अभी तो दिक्कत क्या है दिव्यम, जब से ये ऑनलाइन वाला आ गया ना यूपीआई, तब से डर लगने लगा है कि ये रूट वगैरह करना है कि जेल ब्रेक वगैरह करना है कि नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डेटा इज नाउ इन इंटरनेट। तो वो मेरे को थोड़ा डर लगता है। पहले वो सब नहीं था यूपीआई वगैरह, पहले या तो कैश था या तो कार्ड था, तो उस टाइम जो करना है करो, और कौन क्या ही कर लेगा। लेकिन आज के डेट में जो है, आप देखो पूरा आपका बैंक डिटेल से लेके हर एक चीज, एवरीथिंग इज इनटू यूपीआई एंड ऑल। तो अभी अगर ये सब चीज करने लग गए तो मेरे को खुद डर लगता है, क्योंकि ऐसे भी केबीसी के कॉल्स आते रहते हैं। तो, तो दैट यूपीआई काम नहीं करता विदाउट अ रूम। पता है भाई, उतना मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई, पर इतना पता है यूपीआई तो मोबाइल नंबर से काम करता है, इतना मुझे मालूम है। और लास्ट मैं बस अपना सैमसंग ये किया हुआ था, रूट किया हुआ था, उसके बाद फिर और जब से नौकरी में लग गया हूँ, नौकरी में चले गया हूँ, ये सब सब छूट गया भाई। अभी आप जो बोले ये रोम, लाइक यूपीआई काम नहीं करता विदाउट रोम, लाइक आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये रोम से क्या रिलेशन है। मतलब रैम रोम इतना पता है, रैम और रोम, बट रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, बट स्टिल आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लाइक यूपीआई को रोम क्यों चाहिए, आई लिटरली डोंट डोंट नो अबाउट दिस। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब बहुत पुराना हो गया आज के डेट में। अब I stopped my UPI as my expenses shot up by 150% when I used UPI. Okay, okay, nice. That's the good thing मैं तो बोलूँ। That's a good thing। मतलब मेरा ये आदत नहीं था related to that, but still, if you have stopped using UPI, that's really a good thing।
और नहीं लाइक रोम एज इन ओएस वाला, इट नीड्स स्टेबल ओएस टू रन। ओके ओके ओके। देन दैट्स अ गुड थिंग, अगर इतना ये लोग बैकएंड में चेक कर रहा है यूपीआई वाले, देन दैट्स रियली गुड थिंग, मैं तो बोलूँ। वो टाइम अलग था यार दिव्या, मैं तो बोलूँ कॉलेज टाइम वाज द बेस्ट टाइम, लिटरली इट वाज द बेस्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट। अभी तो क्या ही बोलूँ यार, नॉट दैट गुड, मतलब गुड है, मैं तो बोलूँ थैंक्स टू गॉड, बेटर देन एवरीवन बट स्टिल। कैन रिलेट लाइक इट वाज स्कूल टाइम बट यस, लाइक अभी ट्रेंड के चक्कर में इट्स नॉट दैट फन, वोकिज्म एंड दिस ट्रेंड आर टू थिंग्स आई रियली डोंट लाइक। ओके, लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट जब से ये कॉलेज छोड़ो, मतलब 17 18 तक, मतलब मैं तो बोलूँ दिव्यम, यू नो व्हाट, जब तक जियो आया था तब तक इट वाज गुड, मतलब लेकिन जब से जियो जियो केम टू पिक्चर, दैट्स अ गुड थिंग कि बहुत कुछ वी कैन नो अबाउट, पॉजिटिव थिंग्स है जियो के कारण, लेकिन जब से, लेकिन लाइक यू नो ईच एंड एवरीथिंग हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड, लेकिन जैसे ही फ्री इंटरनेट का गलत यूज किया गया ना, तब से मैं बोल रहा हूँ लाइफ बिकेम लाइक हेल। पहले लाइफ वाज गुड, जियो जब आया, लॉन्च किया, फ्री इंटरनेट मिला, दैट टाइम आल्सो लाइफ वाज गुड, but life became like hell when this negative things came into picture with the help of internet. From that time life became like hell, and मतलब lots of negative things, आज के डेट में देखो आप रेडिट में जाओ, मतलब कहीं पे भी जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म में, पीपल आर लाइक फाइटिंग लाइक हेल लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल आई थिंक दिस नीड टू बी चेंज्ड at least। यार ये internet has ruined a lot and internet has given a lot, but yeah, that's what I feel। और बाकी जो आप बोल रहे हो ना ट्रेंड रिलेटेड, मैं तो बोलता हूँ आई वुड प्रिफर फोकसिंग ऑन रियल लर्निंग एंड मीनिंगफुल स्टफ rather देन फॉलोइंग द हाइप, मैं तो बोलूँ, ठीक है, दैट इज व्हाट आई ऑल्सो थिंक। जो आपने बोला वोकिज्म एंड ट्रेंड्स जो है, तो बेटर है जो एक्चुअल चीज़ है उस पर हम फोकस रखें, वही सीखें, मीनिंगफुल कुछ निकालें उससे, दुनिया को बांटो, जस्ट लाइक यू आर डूइंग।
You are teaching, you are learning, you are teaching. Learn, uh, distribute it properly, positively to everyone. Distribute the knowledge, and just this is what real life means. ठीक है. Now, like using internet feels negative right now if I spend more time. वो तो है भाई. मतलब लाइक अच्छा दिव्यम, आई नीड वन हेल्प. मैं बोलना पूछना भूल गया. अ, आप पूछना भूल गया. मैं सोच रहा था इसके बारे में. इज देयर एनी वे कि हम लोग इंटरनेट मतलब डेस्कटॉप में वी कैन स्टॉप दिस स्क्रोलिंग वाला थिंग? बिकॉज राइट नाउ आई एम सीइंग इन लास्ट 2-3 वीक्स मैं थोड़ा सा इसमें लाइक आई एम वेस्टिंग सम टाइम ऑन दिस स्क्रोलिंग, मतलब इन डेस्कटॉप आई वुड से. डेस्कटॉप में कोई ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है या तो कुछ ऐसा कुछ एक्सटेंशन है जिसमें कि स्क्रोलिंग नहीं होगा इन रील्स? आई मीन व्हाट्सएप, यूट्यूब में क्या है, रील्स है कि शॉर्ट्स है, एनीथिंग लाइक दैट. तो इज देयर एनीथिंग विच विल कीप अ ब्लॉकेज कि you cannot scroll this shorts and all that thing, YouTube shorts, Instagram reels या something like that? Is there anything like that? क्योंकि मैंने अपने अ, एक चीज़ देखा है कि इंटरनेट मतलब मैं तो इंटरनेट मोबाइल में बंद किया हुआ हूँ, लेकिन कभी कभार क्या है, जब मॉर्निंग में काम के टाइम जैसे ही काम हो जाता है क्लाइंट का, व्हाट आई डू फॉर थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो आई स्क्रॉल इन द इन माई लैपटॉप, आई मीन टू से. तो वो मुझे बंद करना है, बिकॉज that is also kind of wasting my time. So if you have any extension like that, please share it भाई. कि मैं सोच रहा था खोजूंगा करके, जस्ट अभी स्ट्राइक किया. तो अगर आपके पास है कुछ तो आप प्लीज शेयर करना. नहीं तो इट्स रियली, आई थॉट एक्चुअली इट्स वेस्टिंग टाइम, क्योंकि काम के बीच में डाइवर्ट हो जाने के बाद फिर वो सही नहीं लगता है, तो इसलिए दैट व्हाट आई वांट काइंड ऑफ. ओके, आई विल शेयर एक्सटेंशन. आई यूज वन एक्सटेंशन है, या प्लीज शेयर भाई, प्लीज शेयर. ज़रूरी है भाई ये वाला. मोबाइल से तो स्क्रोलिंग का बंद हो गया, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो अभी फ्री टाइम मिल रहा है ना, काम के टाइम में, जैसे रिलेटेड टू फ्रीलांस वाला वर्क, उस टाइम काम के टाइम में थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, आई जस्ट गो एंड किया स्क्रॉल कर लेता हूँ. मतलब ऐसा जल्दी नहीं है दिव्यम, आराम से भेज सकते हो. ऐसा नहीं कि पूछो तो आप अभी खोज के, जस्ट टेक योर टाइम आराम से. यू कैन सेंड मी इन मेल, ठीक है, बिंदास. कुछ ऐसा हड़बड़ी नहीं है, यू कैन चिल आराम से, ठीक है. क्योंकि अभी 10 बजने वाला है, मैं खुद लाइव स्ट्रीम बंद करूंगा, तो इसलिए बोल रहा था. आप आराम से भेजो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है.
Do you just want to stop the use of app or just want to stop the feed which you get? The different extent like I used unhook YouTube for YouTube to prevent anything from showing up. मतलब मेरे को क्या है कि अगर मैं शॉर्ट्स में गया दिव्यम, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में और स्क्रॉल किया तो वो मेरे को एक नोटिफिकेशन दे देगा कि डू नॉट स्क्रॉल करके, इस तरीके से, ठीक है। वीडियोस आए चलेगा क्योंकि वीडियोस में मेरा वैसे ही सब्सक्रिप्शंस है वीडियोस में जिसमें कि न्यूज़ वगैरह रहेगा एंड ऑल। बट द थिंग इज़ कि शॉर्ट्स में वैसा कुछ ये नहीं है, शॉर्ट्स में कुछ भी आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं शॉर्ट्स में जाऊँ और स्क्रॉल करूँ तो वो मेरे को एक नोटिफिकेशन दे या मेरे को स्टॉप करे कि डोंट स्क्रॉल करके या डोंट यूज़ यूट्यूब शॉर्ट्स करके, इस तरीके से, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट। अनहुड यूट्यूब, ओके, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सटेंशन। लिंक विजिबल है ना? ना, मेरे को कुछ लिंक नहीं दिखा, कुछ लिंक नहीं दिखा मेरे को। लिंक शायद मिलता नहीं है इसमें, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। एक्सटेंशन अनहुड अनहुक यूट्यूब। हाँ ये सही है यार, यही यही चाहिए था। बढ़िया, सही है। थैंक्स भाई दिव्यम, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स दिव्यम, मैं तो बोलूँ। ओके, लेट मी यूज इट। हाइड स्क्रीन फीड, खाली हाइड शॉर्ट्स मेरे को करना है और कुछ नहीं। हाइड शॉर्ट्स और बाकी बाकी मैं हटा दूंगा, खाली मेरे को शॉर्ट्स हटाना है और कुछ कुछ नहीं चाहिए। ओके। सही है। अभी होम सब्सक्रिप्शन और यू आ रहा है। वाह, सही है भाई, सही है। अब एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा था काम के बीच में, ये सब जो स्क्रोलिंग वगैरह चल जाता है थोड़ा, ल- काम इन द सेंस कि फ्रीलांस काम के बीच में अभी यूट्यूब में उतना नहीं रहता है, कि यूट्यूब में मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ तब आई मेनली सी इनटू दिस ओबीएस स्टूडियो और बाकी चैट, ठीक है। वाह, बढ़िया है। सही है, खाली होम सब्सक्रिप्शन और यू आ रहा है, बस इसको ना निकाल दे यार कोई, ये रहे बस, मैं तो बोल रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स रियली द बेस्ट थिंग आई वुड से, सीरियसली। लाइक यू कैन सी ना, मतलब मैं इतना फेड अप हो गया हूँ अपने इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम तो उतना चलाता नहीं, मतलब फ़ोन भी बंद कर दिया हूँ, दैट आई हैव टू बाय दिस फ़ोन लाइक 700 रुपीज़ आई हैव टू डू खर्चा ऑन दिस, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम फ्रॉम रील्स एंड ऑल। तो आई डोंट इवन यूज़ व्हाट्सएप इन फ़ोन। जब व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी यूज़ करना होता है मैं लैपटॉप खोलता हूँ, इन लैपटॉप आई हैव व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, लैपटॉप में यूज़ करता हूँ जब लैपटॉप खुलता है, दैट्स इट। मतलब सीरियसली, थैंक्स अ लॉट भाई, लिटरली थैंक्स अ लॉट।
It will really save my time. ओके, 10 बजने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। इट्स रियली, मेरा इधर इसलिए ही रहता है, एज आई वर्क एंड ओपन एक्स नंबर ऑफ टैब्स टू ओपन 8 टैब्स एंड आई रन योर स्ट्रीम वर्किंग एज आई नो only to get limited time pass. I send a video to use. I use all extension. I he told he told I have been using them for a year now. Okay, तो आपने कुछ मेल भेजा है क्या? वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल। हाँ, ये सही है यार। डिस्ट्रैक्शन, ओके ओके, चलो थैंक्स यार, थैंक्स, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दिस। एक्चुअली आई नीडेड वो डिस्ट्रैक्शन, तो अब मोबाइल से तो हट गया, बट डेस्कटॉप में थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा था लास्ट 2-3 वीक से। X tab is an extension which prevent too many tabs as else I get 100 tabs open. टैब्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं, टैब्स का तो मतलब ठीक ठाक ही रहता है, जितना काम का है उतना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो मेरा एक यूट्यूब का था वो तो हट गया। इंस्टाग्राम में चलाता नहीं इसमें, आपका डेस्कटॉप में आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, लेकिन यूट्यूब रखना पड़ता है। यू नो वाई? बिकॉज लाइव स्ट्रीम करता हूँ। नहीं तो आई यूज दिस थिंग, एक है ब्लॉक साइट करके, एक है साइट ब्लॉकर। आई यूज दिस ब्लॉक साइट टू क्लोज द, मतलब उसमें क्या है, मैं यूट्यूब डाल चुका हूँ अपने, आपका जो क्या बोलते हैं उसको यार, मेन वाला जो मेरा मेल आईडी है उसमें, क्लासेस विथ मी वाला मेल आईडी में ओपन है, बिकॉज उसमें अगर मैं ब्लॉक साइट में डाल देता हूँ अपना दिस यूट्यूब, तो फिर लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगा। बाकी मैं ब्लॉग साइट कर दी हूँ, लेकिन क्या रहता है, कभी कभार क्लासेस विथ मी वाला वेबसाइट खोल के ही आई यूज टू यूज दैट यूट्यूब शॉर्ट्स, तो अब चलो वो भी बंद हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। सोशल बंद किया ना, तो अब आर्टिकल रीडिंग चालू हो गया था, लाइक न्यूज़ वगैरह पढ़ना एंड ऑल, दैट्स अ गुड थिंग भाई, दैट्स अ गुड थिंग। स्पेंड वीक्स ऑन न्यूज़ एंड आर्टिकल, दैट्स रियली अ गुड थिंग। सही चीज़ है, एटलीस्ट पढ़ाई में ध्यान दोगे भाई, माइंड बहुत सही रहता है, मैं तो बोलूँ। पढ़ाई सीरियसली, जैसे मैच्योरिटी बढ़ता है ना दिव्यम, ये सब चीज़, एक चीज़ अच्छा है कि एटलीस्ट वी आर मैच्योर एनफ टू नो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज के डेट में दिव्यम आप देखोगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप नेट में भी देखना, लोग बोलते हैं ना आज के डेट में सक्सेसफुल होना इज़ वेरी इजी। दे हैव टोल्ड द ट्रूथ, बिकॉज आज के डेट में इतना पीपल आर inclined into इंटरनेट, यू वोंट बिलीव दिव्यम, मतलब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ सुबह, उसमें भी लोग यूज मोबाइल एंड गो फॉर अ वॉक, मतलब सुबह सुबह 5 o'clock 6 o'clock में भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, कम ऑन, मतलब सीरियसली भाई। सो दैट्स द थिंग, मतलब मोबाइल हैज रियली रूइंड एवरीथिंग। वो वीडियो देखना, स्पेंड वीक्स ऑन, वो वीडियो देखना, उससे सब शॉर्ट हो जाता है। दैट्स गुड, थैंक्स फॉर दैट। नहीं भैया, इट्स नॉट गुड आर्टिकल्स, बस मैं अनलेस यूजलेस आने लगे हैं नाउ, यूजिंग एक्स टैब टू प्रिवेंट इट टू। ओके ओके, आर्टिकल रिलेटेड मैं तो बोलूँ, मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ थोड़ा मोड़ा कुछ इधर उधर का, कभी कभार जब नींद नहीं आता है, जब फ्री टाइम रहता है तो बुक्स पढ़ता हूँ, दैट्स इट। और इसमें भी कोई गेम्स वगैरह नहीं है मोबाइल में ढंग के, तो जस्ट आई सिट एंड एटलीस्ट, जब आप ज़्यादा टाइम तक बैठोगे ना विदाउट मोबाइल विदाउट सोशल मीडिया, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वर्क यू आर डूइंग, तो वो एक अच्छा चीज़ है। कुछ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड काम रहता है, कुछ भी रहता है, वो मेरे माइंड में आता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाना सही रहेगा कि नहीं, एंड ऑल दैट थिंग। तो वो एक चीज़ अच्छा हुआ, द डे आई बॉट दिस मोबाइल फोन एंड स्टॉप्ड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, लेट मी टेल यू दैट। तो दैट्स द थिंग।
And really that's a good thing कि people like you are there कि जो they know what is right, what is wrong. Because in today's scenario I have seen people use smartphone like anything. मतलब यू वोंट बिलीव दिव्यम, यहाँ पे एसी लगाने के लिए दो बंदे आए थे, वो दोनों मोबाइल यूज कर रहे हैं अपने लंच टाइम में. मतलब दे हैड देयर लंच एंड दे आर स्क्रोलिंग देयर मोबाइल इन शॉर्ट्स एंड रील्स. दिव्यम लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं मूवी देखने गया था बंगाल फाइल्स करके अभी. भाई मूवी थिएटर में भी पीपल पे मनी टू वॉच मूवी, राइट? उसमें भी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं. मतलब दे आर स्क्रॉलिंग देयर यूट्यूब रील्स या मतलब शॉर्ट्स जो इंस्टाग्राम, मतलब जो भी है, उसमें भी लोग 30 सेकंड पूरा देख नहीं रहे हैं, 15 सेकंड्स देख रहे हैं, दे आर स्क्रॉलिंग अप. 10 सेकंड्स दे आर स्क्रॉलिंग अप. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन मूवी थिएटर. लाइक रिसेंटली आई वेंट फॉर वॉचिंग बंगाल फाइल्स. उसमें देखा मतलब पीपल आर नॉट एट ऑल फोकस ऑन वॉचिंग मूवीज दैट दे हैव पेड. मतलब दे हैव पेड अराउंड 200, मतलब जो भी 190 200 जो भी है, they have paid it, still they are not watching because that movie was of 3 hours, but still भाई. और रील्स देख रहे हो तो रील्स भी 5 सेकंड 10 सेकंड देख रहे हैं, दे आर स्क्रोलिंग अप. सो वही मेरे को एक चीज डर लगने लगा कि जो मैं प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ, आई डोंट नो पीपल विल वॉच दैट प्रोजेक्ट. वो 3 घंटा 4 घंटे का प्रोजेक्ट वो लोग देखेंगे कि नहीं, आई रियली डोंट नो, सीरियसली. मतलब मेरे को तो वो डर लगने लग गया, मैं जो प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ या जो वीडियो डाल रहा हूँ, पीपल विल वॉच दैट और नॉट. क्योंकि पीपल रील्स ही पूरा नहीं देख रहे हैं 30 सेकंड का या 60 सेकंड का जो भी, उसमें भी 10 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं. तो मैं आई वॉज रियली शॉक्ड. आई वॉज लाइक व्हाट टू डू नाउ. एंड दैट्स ट्रू, लाइफ फील्स डिफरेंट एट स्टार्ट. लाइक आपने अभी अभी स्टार्ट किया ये सब, राइट? या दिस वन इफ यू सी दिस मोबाइल फोन, इसको हुआ है 4 महीना हो गया, अराउंड 4 साढ़े 4 5 महीना मान के चलो, 4.5 से 5 महीना हुआ है टू यूज दिस. लाइक आपने अभी स्टार्ट किया क्या? हाँ वही 4.5 5 घंटा, आई वुड 4.5 से 5 महीना हुआ है मोबाइल से सोशल मीडिया हट के. और रिलेटेड टू द रील्स एंड ऑल, वो अभी लास्ट 2 3 हफ्ते पहले मैं एक चीज़ अपने आप पे नोटिस किया कि आई एम मोर फोकस्ड ऑन रील्स एंड ऑल दैट थिंग. तो वो भी इसलिए मैं आपसे पूछा कि कोई एक्सटेंशन एंड ऑल, एंड यू हेल्प मी, दैट थैंक्स अ लॉट. After some time you start to feel FOMO, so I started watching live stream to prevent this lack of focus and real interaction. Correct. That's the thing. मतलब ये तो बात है, पेशेंस अब लोगों का हट गया है. मतलब मैं देखा कि नो डाउट द मूवी वॉज ऑफ मोर देन 3 आवर्स, ठीक है, स्टिल बोरिंग थोड़ा रहेगा बिकॉज वो हिस्ट्री के रिलेटेड है. इट इज़ नथिंग लाइक कि गाना रहेगा या मारकाट रहेगा, नथिंग. बड़े एक्टर्स भी नहीं थे, बट स्टिल भाई अगर पे करके आ रहे हो मूवी देखने, एंड देयर ऑल्सो पीपल आर यूजिंग फोन्स फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स, भाई गुड थिंग इज दैट कि अभी थोड़ा सा भी मेहनत करोगे आप आगे बढ़ जाओगे. वर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो वीडियोस डाल रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो अपने यूट्यूब में डाल रहे हो, वो कौन देखेगा? वो बात है. तो वो एक डर लगता है कि सोचो जो भी रील्स वगैरह डाल देता है XYZ वीडियो शूट करके, भाई आई हैव सीन पीपल आर हैविंग गुड लाइक्स एंड व्यूज, नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स. सो नो कमेंट्स फॉर दैट एज वेल बिकॉज वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक दिस नीड टू बी स्टॉप्ड. जो इतना टाइम वेस्ट एंड ऑल, this actually need to be stopped. So this is really shocking thing, let me tell you that.
T3 में क्या होगा? ओके T3 ओके partition by category. So we are done with this right now and यहाँ तक तो हो गया है फिलहाल. असाइनमेंट 8 तक डन एंड डस्टेड है. So let's see. अभी we once we reach 1000 subscriber we will share all these things. Until assignment 8 it's done and dusted. अभी कल assignment 9 करेंगे and lots of things to work on. कल बाकी सब mail वगैरह भी I have to check out. तो let's close the live stream right now. And thank you everyone for joining the live stream. Thanks to each and everyone for joining the live stream today. Joining the live stream today. And so good night everyone. Let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye. Take care. Happy coding, happy learning, and let's meet tomorrow then. Bye bye.